नमस्ते पुष्पा मैम। कौन सा हेल्थ प्रॉब्लम हम लोग एड्रेस कर रहे हैं जिससे आप लोग पीड़ित हैं और अपने को बाहर निकालना चाहते हैं? यू वांट टू कम आउट ऑफ योर करंट कंडीशन. So what is that is affecting you? Please write in the chat box. Let's make it a little more interactive so that I know what I'm talking about and you are able to understand कि आप लोग किस लिए यहाँ पर join हुए हैं. What is this webinar all about? Awareness and tiredness. Okay. So it's an aging process. We all age. हमारा सबका degeneration भी होता है. That's a normal process. अब उसमें तकलीफें भी होती हैं, right? Especially for the women post 50 as they approach their menopause. We have a lot of troubles because of bone loss, right? Estrogen level कम हो जाता है. So the pain surfaces, the inflammation surfaces, stiffness surfaces, but is popping a pill the solution? Yes or no? सुबह उठ के आँख खुलते ही अंगड़ाई लेते हुए एक दवाई खाना, is it the solution? Muscular dystrophy, these kind of chronic disorders is on the rise. So we need to be a little more careful about our health. Pain in the waist. आज छोटे छोटे बच्चों को भी प्रॉब्लम आ रहा है, which was not there in the yesteryears, right? तो क्या कर सकते हैं हम ताकि हम अपने करंट कंडीशन से बाहर निकले? Okay? So for that, we need to do something which we and we alone can do. हमें कोई भी help नहीं कर सकता है. In the sense that no external help is required. Okay? So would you like to know what is the solution for your current problem? क्या रास्ता है आपके current problem से निकलने के लिए? I can see Priyanka Saxena ma'am smiling. So anybody? Definitely. Okay. तो सब लोग आराम से बैठ जाइए. And if I have your permission, can I share the screen so that I can convey to you what exactly we are talking about? Pain above the left hip. तो pain अभी बहुत common term हो गया है. आप जिसको सुनते हैं उनको pain होता है. Okay? So again, the mental pain and the physical pain is related, right? Vice versa. तो pain होता क्यों है? Right? So pain, according to Ayurveda, pain happens when the flow gets obstructed. Flow reverse में जाता है. हम लोग खाना खाते हैं, खाना अंदर जाना चाहिए. कभी कभी ऊपर की तरफ आता है तो acid reflux हो गया. Right? Stomach pain होता है. So like this, there are various kind of pains. तो flow, वो वायु जब रुक जाता है, obstruction होती है, तब पेन शुरू होता है जो आपको दिखता है. बट उसका रूट कॉज क्या है? What is the root cause of your pain? Be it the knee pain, be it the hip pain, be it the frozen shoulder. What is the root cause? वो हमारे स्वामी जी प्राण शक्ति डायग्नोसिस के द्वारा पता करते हैं. So when we get to the root cause, we know exactly the reason for your pain. तो जब आप रीजन पे आ गए तो आपको सोल्यूशन मिलना भी आसान है. आप ऊपर से उसको ठीक नहीं कर रहे हैं. सो वी आर ऑल लुकिंग फॉर परमानेंट सोल्यूशन. तो जब परमानेंट सोल्यूशन, तो हमें थोड़ी सी गहराई में जानी पड़ेगी, इन द डेप्थ ऑफ थिंग्स. सो आई जस्ट टेक 2 minutes ऑफ योर स्क्रीन टाइम एंड आई शेयर द स्क्रीन. थैंक यू सो मच. Can everybody see the screen? Is the screen visible? Okay. Yes. So Ashtaang Chikitsa online therapy for Neuro Musculoskeletal problems. तो किसी को heel pain होता है, किसी को waist pain होता है. All this comes under Neuro Musculoskeletal problems. तो आगे देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इन problems के लिए.
Namaskar, I welcome you all to the Ashtaang Chikitsa webinar. My name is Rachna Bothra and I'll be your host for today's webinar. I'm a part of an organization called Avisa Healing and Fitness Private Limited. So what exactly are we going to discuss in today's webinar? We will present to you a unique therapy for curing musculoskeletal problems that you or someone in your family may be suffering from, but have not yet found permanent relief despite spending a good amount of money on various treatments. So Ashtaang Chikitsa can also be used as a preventive method so that your internal organs are functioning at their optimum levels. तो अब आप सोच रहे होंगे कि न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स के साथ इंटरनल ऑर्गन्स का क्या लेना देना है, राइट? तो आगे हम बताएंगे ये हम लोग कैसे कोरिलेट करते हैं, द इंटरनल ऑर्गन्स एंड द प्रॉब्लम्स व्हिच यू सी ऑन द सर्फेस लाइक इन्फ्लेमेशन, पेन, स्टिफनेस, ये हम लोग कैसे रीडायरेक्ट करते हैं टू द इंटरनल ऑर्गन्स. Okay, just a sec. So now I'd like to introduce you all to Swami Raj Vibhuji, a rare Kumbhak yogi. तो कुंभक किसी ने सुना होगा नाम, किसी ने नहीं सुना होगा. तो in a broad level it is breath retention, right? तो breath retention, how we use it therapeutically. So that is what Swami Raj Vibhuji does. He uses kumbhak as a therapy to solve many diseases like diabetes, heart, thyroid, and even life-threatening diseases like cancer, जिसका हम लोग सब जानते हैं. Even today, we don't have any solution in allopathy. So at Avisa Healing and Fitness, we are reviving Ashtaang Chikitsa to address the structural issues of a human body. So what do we mean when we say the structure of the human body? The musculoskeletal system is one of them. How the structure of the human body can function in its best possible way, that's our purpose at Avisa Healing and Fitness. It's a profound way of addressing the aspects of a human body. So who is this webinar for? For people who are tired of temporary treatment and are looking for natural and permanent solution. जैसा कि मैंने बताया, आपकी प्रॉब्लम है, आप खुद ही solution ढूंढ सकते हैं. There is no external intervention required. So people who want to take charge of their health in their own hands and are willing to work on themselves to come out of their health problems. Reversing neuromusculoskeletal problems with Ashtaang Chikitsa. Freedom from pain and medicines. So Swamiji will talk about the 8 sharir or the softwares. Srishti sharir, Pramana sharir, Garbha sharir, Sankhya sharir, Dosha sharir, Prakriti sharir, Marma sharir, Vikriti sharir, जिसके बारे में डिटेल्स आपको इसके बाद पता चलेगा स्वामी जी की वीडियो से. तो जब हम न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल के बारे में बात करते हैं तो the main 2 sharir that we take into account, of course every other sharir is equally important, but the prakriti and the vikriti sharir. So hota kya hai, once you are aging, the degeneration happens at a faster pace and the regeneration cannot keep pace with your degeneration. So what happens? The imbalance starts and the pain, inflammation is reflected, resulting in osteoarthritis, resulting in frozen shoulders and many other diseases. So ये imbalance को हम लोग correct करते हैं through Ashtaang Chikitsa. The imbalances between the regeneration and the degeneration. Obviously, degeneration तो सबका होता ही है. It's a very, very normal process of aging.
बट हम उसको स्लो डाउन कैसे कर सकते हैं, रीजनरेशन कैसे बढ़ा सकते हैं, एंड हाउ वी कैन देन cure our diseases. That's what we are doing as Ashtang Chikitsa. So Ashtang Chikitsa, of course, the list goes on and on. आज के टाइम में न्यूरोमस्कुलर हेल्थ प्रॉब्लम्स की कमी तो है नहीं, but these are some of the common problems that our participants are facing, and we see that it is quite common among the current generation as well. So knee pain, lower back pain, hip issues, pain in the leg, drop foot, spine-related issues, slip disc, disc bulge, weak spine, spondylitis, frozen shoulder, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, tennis elbow, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, osteoporosis, dislocation, neuropathy, or the nerve issue. So let's hear from Swami Raj Vibhu ji. What exactly is Ashtang Chikitsa? Thank you for listening to me patiently. I'll just share with you how we are going to proceed in the webinar. अभी आप स्वामी राज विभू जी के वीडियो से समझेंगे what Ashtang Chikitsa is all about. उसके बाद we will have somebody live coming to share his journey of Ashtang Chikitsa. Of course, we have the program details after that about the online therapy classes. Last but not the least, Swami Raj Vibhu ji himself will be joining us live to answer all your questions. So kindly write all your problems in the chat box along with your name and number. Thank you so much. Namaste, and over to Anil ji to share the video. So let's start. Neuro Musculoskeletal problem. We are talking about Neuro Musculoskeletal problem. आपके शरीर में हड्डियों का, मांसपेशियों का और नसों का जो गठजोड़ होता है, they actually create every movement in your body. आपके शरीर में वही movement create करना है. So I'll take one example and let's go ahead understanding why problem happens and what is the solution. मैं एक example से शुरू करूंगा और उसको लेके हम समझेंगे. So suppose what is the most common problem at this point of time? सबसे common problem क्या है आज के समय? Knee pain. Let's take knee pain as an example and understand what we are talking about. हम बात क्या कर रहे हैं उसके बारे में knee pain से start करते हैं, right? So some person who got an injury in one of the knees will get a knee problem in that leg. है कि नहीं? अगर एक knee injury किसी का हो जाता है तो वो उस घुटने में उसको परेशानी होगी. और a sports person who has somehow damaged one knee, एक अगर घुटने को किसी तरीके से एक स्पोर्ट्स के पर्सन ने, एक बंदे ने अगर डैमेज कर दिया है तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी. बट दैट इज लोकलाइज्ड प्रॉब्लम. डज एवरीबडी हैज डैमेज देयर नीज? क्या सभी ने अपना नी डैमेज कर दिया? नो. People are still getting into problem. Then when you go to the doctor with your knee problem, जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं अपने घुटने की प्रॉब्लम लेके, and the most common thing that you hear is degeneration in the joint. जो सबसे कॉमन चीज है, जो सबसे पहले डॉक्टर बोलता है वो तो आपके घुटने घिस गए हैं, isn't it? Degeneration. So the next thing can be degeneration. यानी कि आपके नी घुटने में जो कार्टिलेज था वो बन नहीं रहा, वो घिस रहा है, वो प्रॉपरली बन नहीं रहा, उसको बनना भी चाहिए था, रीजनरेशन भी होना चाहिए. रीजनरेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस ह्यूमन सिस्टम, बट रीजनरेशन इज नॉट हैपनिंग प्रॉपरली. डीजनरेशन इज हैपनिंग. दूसरा कारण हो गया, नाउ सम पर्सन गोज टू अ डॉक्टर विथ अ सोलोन नी, इन्फ्लेमेशन इन द नी. लालीपना है उसके घुटने में, इन्फ्लेमेशन है, सूजन है. The doctor will still say there is a localized problem at the knee. वो कहेगा एक्सरे करा लो, वो कहेगा जाके स्कैन करा लो, सीटी स्कैन करा लो, and he would try to see the problem there itself. वहीं पे वो प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करेगा और सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा. But do you know why inflammation happen in your body?
वाई इन्फ्लेमेशन क्यों होता है, सूजन क्यों आ जाती है आपके जोड़ों पे? शायद आपका लिवर ठीक नहीं है. If your liver gets impacted, there will be inflammation in the body. If your digestion is not proper, there will be inflammation in the body. Third thing, if there is an increased uric acid in your body, your kidney is not functioning properly, then also there will be inflammation. So, क्या इसका रीजन ढूंढा गया आपके लिए? Why this inflammation is happening? No. So, even if you go for a liver test, liver will not show any sign of damage till it gets damaged to 95%. 95% जब तक लिवर का डैमेज नहीं होगा तब तक लिवर के टेस्ट में कुछ भी नहीं आने वाला. So your problem will remain undiagnosed. Usually these diagnoses are not done. तो इन्फ्लेमेशन क्यों है यहां पे? आपके जॉइंट में प्रॉब्लम क्यों? बिकॉज देयर इज अ लिवर प्रॉब्लम, बिकॉज देयर इज अ किडनी प्रॉब्लम, because there is an issue with digestion. Now, Rachana ji said after menopause, osteoporosis, osteoarthritis is very common. Yes. What does it mean also? आपका घुटना का दर्द क्या रीजन क्या हो सकता है? Hormone imbalance, isn't it? Another reason is hormone imbalance. Hormone imbalance होगा तब भी आपके घुटने में दर्द आएगा, कमर में दर्द आएगा, lower back pain and your knee pain can happen. So what are you doing to balance your hormones? There is no way. कोई तरीका नहीं है. Now if the osteoporosis has happened, हड्डियां अगर brittle हो गई, कमजोर हो गई हैं, porous हो गई हैं, बहुत जल्दी टूटने की आशंका रहती है इसके अंदर. If they have become brittle, by calcium, how many people have come out of osteoporosis by taking calcium? Not even a single example. एक भी example नहीं है. Rather, do you know if you take long-term calcium, the chances of breast cancer will increase by 200%. So I'm just trying to tell you, don't see problem as a localized deficiency or disalignment or some kind of a breakdown at a localized position. The discrepancy at a localized position is not the only way to look at a problem. It can happen due to many reasons. So what we are talking about is there are 8 major factors, 8 कारण हैं because of which one problem happens, जिसकी वजह से एक problem आती है. So if you really want to come out of problem, then you will have to work upon these 8 factors. 8 कारणों पे काम करना पड़ेगा. This is Ashtaang Chikitsa. Now in the last 50 years, पिछले 50 साल 100 साल तक का आप ले जा सकते हैं. There is example for that. Nobody has come out of their issues. घुटने आज तक किसी के ठीक नहीं हुए ना. Nobody has come out of their knee problem. ज्यादा से ज्यादा to the extreme, what the doctor will say, do a knee replacement. अपने घुटने बदलवा लीजिए. So what does it mean? It cannot be treated. According to the modern treatment, it cannot be treated. ये ठीक हो ही नहीं सकता. So I would tell you to remember your grandfather, grandmother. अपने दादा दादी नाना नानी को याद करें सर. क्या उनको इतनी एज में प्रॉब्लम थी? Did they have problem at this age? No. So why deterioration or the problem was not happening at that time to this scale? इस स्केल में उस समय प्रॉब्लम हो ही नहीं रही थी. आज क्यों हो रही है? Because the system has gone weak and we are not doing anything on this human body to strengthen it. इसको मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कोई काम नहीं कर रहे. So let's start Ashtaang Chikitsa. The first thing, when I'm talking about Sharira, the word Sharira means body and mind both. जब मैं आपको बोलूंगा शरीर, तो इसका मतलब body as well as mind. Because in कुंभक पद्धति, in कुंभक कलाचार और आयुर्वेद कलाचार, in yoga कलाचार, there is nothing called as mind separately. It's always Sharira. Both body and mind complex is called as Sharira. मैं एक एग्जांपल दूं आपको. Let's take example. Open your mouth and try to think. अपना मुंह खोलिए और सोचने की कोशिश कीजिए. Open your mouth and try to think. Oh, it becomes difficult. 50 किताबें पढ़ लीजिए, दिमाग को रोकने का कोई तरीका नहीं मिलेगा.
and just a little bit, if you know how it works, ये काम कैसे करता है, अगर ये आपको मालूम चल गया तो एकदम से पकड़ लेते हैं. You just catch it then and there. तो मुंह खोल के आप सोच नहीं पा रहे. So is your action and your mind different? Is your body and mind different? No, it is not different. ये अलग नहीं. So your body and mind complex constantly strives to live. ये आपका शरीर हमेशा एक जद्दोजहद में रहता है जिंदा रहने के. हाँ या ना? So there is something called as prakriti, new cellular formation. नए नए सेल्स और टिश्यूज आपके शरीर में बनते हैं. And there is another aspect called vikriti. Lot of cells which has aged, they die. बहुत सारे ऐसे सेल्स और टिश्यू जो आपके शरीर में काम नहीं कर पा रहे ठीक से, वो खत्म हो जाते हैं. After a certain time period, certain age, they wear off. This is wearing off is called as vikriti, and production is called as prakriti. Right? ये दो चीज हमेशा चल रही है. There has to be a balance of these two things, manufacturing and release. ये दो चीजें हमेशा बैलेंस में होना चाहिए. Now, I'm giving you another example. We will take examples so that you understand what I'm saying. बहुत सारे example लेंगे समझने के लिए कि हम क्या बोल रहे हैं. ये these are things you know already, but you are not paying attention to your body. आप ये चीज जानते ही हैं मगर वहां पे ध्यान नहीं जा रहा आपका. So when there is a polluted area, you enter a polluted area. एक बहुत ही प्रदूषित जगह पे आप जाते हैं. If you watch your breath, अगर अपनी सांसों को जरा ध्यान दे सांसों पे, what happens more, inhalation or exhalation? जरा सोचिए, please think about it because your body is the primary responsibility. क्या करते हैं आप? ज्यादा इनहेल करते हैं, ज्यादा एक्सहेल करते हैं? ज्यादा सांस लेते हैं, छोड़ते हैं? ज्यादा छोड़ते हैं आप, लेना नहीं चाहते हो. योर बॉडी डजंट वांट टू. अगर धुआं कहीं भरा है तो आप देखेंगे आपकी सांस रुक जाती है. यू डोंट टेक इन, यू ट्राई टू एक्सहेल मोर. इफ यू गेट टायर्ड, अगर आप थक जाते हैं, व्हाट इज टायर्डनेस? थकना क्या हुआ? लॉट ऑफ टॉक्सिन्स इन द बॉडी, इजंट इट? व्हाट डू? यू डू लॉन्ग एक्सहेलेशन. This is what you do. You do long exhalation, less inhalation. Now, for holidays, if you go to a hill station, अगर holiday के लिए आप hill station में गए, what happens more, inhalation or exhalation? If you observe, you inhale more. जब भी आपके शरीर में सही situation मिलती है, if there is a right situation, your body wants to manufacture more, it inhales more. When there is a bad situation, your body wants to throw out more. आपका शरीर चीजें बाहर निकालना चाहता है, more exhalation. So how is your environment, nearby environment? आपने आसपास के वातावरण का क्या हाल किया है? आपने नहीं, मैं तो कहूंगा सभी ह्यूमैनिटी. I'm just talking about humanity. I'm just saying it in that way. हमने क्या किया वातावरण का? खराब कर दिया. Do you think your body wants to inhale more or exhale more? It wants to inhale less and exhale more. So if lot of destruction, no construction. So आपके घुटने घिसेंगे कि नहीं घिसेंगे? बंद तो रहे नहीं, आपने सिचुएशन नहीं छोड़ी. What kind of food you are eating? भोजन कैसा करना चाह रहे हैं? Genetically modified food, isn't it? Your body doesn't want to take it. लेना नहीं चाहता, कभी कभी उल्टी कर देता है, बाहर निकाल देता है. Your body pukes it out also sometimes. वो बाहर निकालना चाहता है. It doesn't want to take in. So regeneration will happen more or degeneration will happen more? Degeneration will happen more. And correlated with the situation. इसीलिए आपके joints घिस रहे हैं, उनमें दर्द आ रहा है. Regeneration नहीं हो रहा, नई चीजें नहीं बन रही, घिसे जा रहे हैं. So there is an imbalance of prakriti and vikriti. इसका बैलेंस होना चाहिए था, मगर ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है. So ये दो का अगर आप बैलेंस नहीं बनाएंगे, there is no chance of recovery. So what are you doing to create a balance of these two things? You are not doing anything. तो अपना ट्रीटमेंट करेंगे नहीं तो होगा कैसे? First of all, so this is the first thing that we need to get to, a balance of prakriti
and Vikriti, a balance of regeneration and degeneration. And there is a method to do it. इसका एक तरीका है करने का. अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, what do? Somebody is hitting you, कोई आपको मार रहा है. You feel damage, ना? You think there will be a damage. What do? क्या करते हैं आप? सांस रोक के टाइट कर लेते हैं अपने आप को. You hold your breath and tense your body, isn't it? Yes or no? आप जानते हैं इस बात को. ऐसा नहीं है. Whatever I am saying, you know it already. तो आप सांस रोक के बचाते हैं ना. अगर हॉरर मूवी देख रहे हैं, if you are watching a horror movie, there are certain scenes that you don't want to watch. देखना नहीं चाहते ना, हाथ रख लेते हैं आंखों पे. एक बच्चे को देखो. See a kid, the kid will close the eyes. So you hold your senses also to protect yourself. अपने आप को बचाने के लिए अपनी दृष्टि को, कहीं पे खराब स्मेल आया तो आप रोक लेते हैं ना सांस. You hold your breath. If there is a bad sound, you close your ears. आप नहीं सुनना चाहते इसको. You hold your senses. So holding your breath, holding your senses is called as kumbhak. इसको नाम दे रहे हैं हम. So it is not just breath hold. It is the hold of senses also. आपकी पंच तन्मात्राएं जो है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, all the 5 senses. You hold the senses to protect yourself. So there is a way of creating more prakriti and balance out the vikriti. You can't stop vikriti. देखिए आप degeneration stop नहीं कर सकते. This is a natural process of life. You will age, but you must age gracefully. ठीक है, तो how to balance vikriti? There is a method to balance vikriti. Ashtaang Chikitsa will give you that method to enhance prakriti and balance the vikriti. So then, next thing, when there is a regeneration, कोई नई चीज पैदा हो रही है, so it will expand, isn't it? वो फैलेगा. एक शिशु इतना छोटा सा पैदा होता है. There is a little infant which gets born, and then the infant expands, isn't it? This expansion factor is called as samkhya. The real word for expansion is samkhya or proportionate expansion. This is called as proportionate expansion. सही तरीके से संतुलित विस्तार, इसको क्या कहेंगे? संतुलित विस्तार. Suppose your one hand becomes long, the other hand remains short. एक हाथ लंबा हो गया, एक हाथ छोटा रह गया. Will you get joint problem in one of the shoulders? आपको एक शोल्डर में joint problem आएगी ना? So if you have one leg a little longer than the other leg, एक पांव ज्यादा लंबा है, दूसरा पांव थोड़ा छोटा है, so you'll get knee pain in one leg. आपके एक पांव में knee pain होगा. You'll get hip pain at one side of the hip. If your body is not aligned, the right side and the left side is not aligned, you will get a problem. Neuro Musculoskeletal problem. अगर आपकी एक muscles खिंच गए because of uneven expansion, skin ढीली हो जाती है ना. Skin becomes flabby when there is an uneven expansion. You get stretch marks, isn't it? You know what is stretch mark? You get stretch mark because there is an uneven expansion. असंतुलित विस्तार अगर होता है तो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है. At muscles, at joints. आपकी मांसपेशियों में प्रॉब्लम आ सकती है, मांसपेशियां फट सकती है, आपके जॉइंट में प्रॉब्लम आ सकती है ना वहां पे. So disalignment, if you see at this point of time, most of the people do not even walk straight. The way we are sitting, the way we are living our life, we don't even sit straight. कितने लोग सीधा बैठते हैं? You always take a back rest, isn't it? So there is always, there will be, if you don't use your body proportionately, there will be disalignment. और आपकी joint problem disalignment की वजह से भी हो सकती है. There are three basic disalignment that happens in the body. 3 basic disalignment है. नाभि, your navel can get disaligned. We call it dharan. Your chest can get disaligned. आपकी छाती डिसलाइन हो सकती है. That part is called as kaudi. And your legs can get disaligned. आपके जांघें डिसलाइन हो सकती है. That is called as nale in the local terminology.
Nabhi, Kaudi, Nale. Now, if your navel get disaligned, you'll get into digestive issue, metabolic issue. आजकल diabetes बहुत हो रहा ना? आजकल diabetes बहुत हो रहा है. Do you know one of the reason of diabetes is disalignment of the navel? But nobody is correcting it. If you have asthma or allergies, respiratory disease, corona is also a respiratory thing. People's respiratory capacity is going down because of the disalignment of Kaudi or the chest factor, and the disalignment of the thighs or the legs will get you into hip problem, knee problem, ankle problem, sciatica, those kind of things. So what are you doing to balance it? आप क्या कर रहे हैं इसको बैलेंस करने के लिए? तो एक काम करें, लेट्स सी हाउ डू वी बैलेंस. हम बैलेंस कैसे करते हैं देखें जरा. अपने दाएं हाथ को पकड़ लें, होल्ड योर राइट हैंड ओवर द टॉप एंड ट्राई टू पुल इट. खींचने की कोशिश करें. जस्ट पुल ऑन द लेफ्ट साइड. बाईं तरफ खींचने की कोशिश करें. व्हेन यू पुल, व्हाट यू डू? ये जोर लगाने के लिए आप क्या करते हैं? यू होल्ड योर ब्रेथ. यस और नो? सांस रोकी आपने? Even if you have to align yourself, what is the basic key? वो कुंजी क्या है? वो चाबी क्या है? It is kumbhak. It is holding your breath. So if you use breath hold in a particular manner, you can align the whole body. That is what we teach in Ashtaang Chikitsa, how to align your body. And once your body is aligned, you will feel very light. आपको हल्का महसूस होगा. You lose excess of weight. जो भी आपके शरीर में बचाने के लिए शरीर ने कुछ भी किया है वो आपका ठीक हो जाएगा. So Sankhya Sharir, this is the second factor. Now again, if you have to align or Sankhya, if you have to correct the Sankhya, you have to use Kumbhak. Now let's go to the third part, Pramana. Now one more thing in Sankhya, what I want to actually tell you that there is a way of doing a movement and holding the breath. अगर आपको तरीका पता है ना, how to align, how you want to align your navel, how you want to align, how you can align your chest. अगर ये तरीका पता है ना, then only you will be able to align. So it needs a little commitment. एक थोड़ा committed atmosphere चाहिए होता है उसके लिए. That is why we teach it in the class. हम क्लास में सिखाते हैं. Now the fourth aspect, pramana sharira, prakriti, vikriti, sankhya, pramana. चौथे पे आ गए हम, pramana. Pramana means density. इसका मतलब होता है density, गुरुत्व, भार. Density. इसी को धातु भी कहते हैं. We call it धातु. There are different types of tissue in your body, isn't it? आपके शरीर में अलग अलग तरीके के कोशिकाएं हैं. Like bone is very much dense. हड्डी जो है वो बहुत भारी होती है. Your muscles is less denser than your bone. आपकी जो मांसपेशियां हैं वो उससे कम घनत्व है उसमें. और आपके फैट में एडिपोज टिश्यू जिसे कहते हैं, योर फैट मसल, वो योर फैट टिश्यू और एडिपोज टिश्यू इज वेरी लाइट कंपेयर टू द मसल्स एंड बोन्स. जिनके शरीर में मसल ज्यादा होगा उनका वेट ज्यादा होता है. पीपल हु हैव डेंसर बोन्स एंड मसल्स, देयर वेट इज हाई इवन दो दे आर लीन. वो पतले होने के बाद भी उनका भार ज्यादा होता है. So there are different kinds of tissues. This is called as sapta dhatu. 7 different density tissue की है आपके शरीर में. There are 7 different densities, tissue of different densities. रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र. These are 7 densities. ये अलग अलग भार के tissues हैं. If the densities becomes less, if you lose the density, your organ functioning will not happen properly. आपके अंदर जितने भी organs है, heart, liver, lungs, kidney, ये जितने भी organs है ना, इनको काम करने के लिए there is a density required. So we are losing on the density of our organ. हमारी organ weak हो रही है. What is diabetes? Your pancreas is not functioning properly. Your liver is not functioning properly. What is hypothyroidism? Your thyroid gland is not functioning properly. है ना? It has also a relation with liver. What is kidney disease? Your kidney is not functioning properly. Organ damage आजकल ज्यादा है. You will see more chronic disease are there. है ना? Organ से related disease. So how do you correct your organ? Suppose there is a joint pain due to liver dysfunction. Liver के कारण आपके शरीर में joint pain है, inflammation.
So you will have to correct the liver. आपको liver ठीक करना पड़ेगा. Is there a medicine to correct liver? No, there is no medicine to rejuvenate your organ. आज तक कोई दवाई नहीं बनी है आपके हार्ट को ठीक करने के लिए, आपके किडनी को ठीक करने के लिए, आपके लिवर को ठीक करने के लिए, आपके पैनक्रियास को ठीक करने के लिए, आपके लंग्स को. देयर इज नो मेडिसिन. देयर कैन नॉट बी अ मेडिसिन. दवाई हो ही नहीं सकती है. सो यू विल हैव टू वर्क इंटरनली. आपको अंदर काम करना पड़ेगा. अंदर आप काम कैसे कर सकते हैं? बाहर तो कर सकते हैं. यू कैन डू एक्सरसाइज, यू कैन डू वेट ट्रेनिंग, इजंट इट? But people into sports and weight training and exercise, they also get diabetes, they also get heart attack. 40-40 साल के जवान जो है वो बॉडी बिल्डर्स, वो हार्ट अटैक आ रहा है. एक्सरसाइज कैन नॉट रिजुविनेट योर ऑर्गन. एक्सरसाइज से आपका हार्ट स्ट्रांग नहीं होने वाला. सो हाउ विल इट हैपन? ये होगा कैसे? शुड वी डू ए लिटिल एक्सपेरिमेंट? एक एक्सपेरिमेंट करें. नाउ कीप योर लेफ्ट पाम लाइक दिस. अपने बाएं हथेली को ऐसा रखें, दाएं मुट्ठी बांध ले दाएं हाथ से. मेक अ फिस्ट फ्रॉम द राइट हैंड. Keep your left palm like this and try to push your left palm very hard. जोर से धक्का दीजिए अपने बाएं हथेली को. पुश कीजिए, जोर से पुश कीजिए. How do you create this strength of pushing? ये जो शक्ति आप क्रिएट करेंगे, जो स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हैं धक्का देने का, कैसे कर रहे हैं? You are holding your breath. You are holding your breath behind. करके देखिए दोबारा. Again, do it. Do it again. See, push it hard. You hold your breath. सांस रोकते आप, बट सांस रोक के बाय होल्डिंग द ब्रेथ, वेयर आर यू क्रिएटिंग द ट्रिगर? वो ट्रिगर कहां, वो एफर्ट कहां क्रिएट कर रहे हैं? हियर, यहां पे कर रहे हैं एफर्ट, बाहर कर रहे हैं, एक्सटर्नल एफर्ट डाल रहे हैं ना. यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट. बाय होल्डिंग योर ब्रेथ यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट. सो व्हेन यू लिफ्ट समथिंग, तो ये भार आप उठाते हैं. सो हाउ डू यू लिफ्ट वेट? वेट कैसे लिफ्ट करते हैं? यू होल्ड योर ब्रेथ. यू कांट लिफ्ट वेट विदाउट होल्डिंग योर ब्रेथ. You hold your breath and when you lift weight with the right hand, suppose कीजिए आप दाएं हाथ से वेट उठा रहे हैं, the trigger goes to the right hand muscles. दाएं हाथ के मसल में ट्रिगर चला जाता है and this becomes strong. Your right hand muscle grows. ऐसा ही होता है ना, बॉडी बिल्डिंग ऐसे ही होता है ना. This is how weight training and bodybuilding happens, isn't it? So by holding the breath, you are creating an external trigger. Now, very important part of this webinar. You hold your breath and do not move your body. What will happen? आप सांस रोक लें, अपने शरीर को बिल्कुल ना हिलाएं. क्या होगा? What will happen? You are not creating an external trigger. अब बाहरी दिशा नहीं दे रहे इसको, तो कहां जाएगा ये? डायरेक्शन कहां जाएगा? इंटरनली योर हार्ट रेट विल इंक्रीज. आपके हार्ट बीट से हो जाएगी ना, गर्मी लगने लग जाएगी शरीर. यू स्टार्ट स्वेटिंग आफ्टर सम टाइम, पसीना आ जाएगा. Where did the trigger go? Inside. So by breath hold, you can create an internal trigger. Can you direct it towards your heart, towards your liver, towards your kidney, towards your thyroid, towards the other organ and make it strong? इसके अलावा कोई चारा नहीं है. देख लीजिए. How you made one hand more stronger than the other? एक हाथ कैसे आपका ज्यादा ताकतवर हो गया दूसरे से? Because you worked with that hand more, isn't it? आपने उस हाथ से ज्यादा काम किया. And how did you work? Breath hold and direction. Breath hold and direction. That hand became strong. So if you do breath hold and direction inside, that organ will become strong. This is the only way. There is no other way. So how you can rejuvenate your liver? How you can make your liver strong? How you can make your heart strong? By us creating a specific direction. This is Kumbhak therapy, which is a part of Ashtaang Chikitsa. So how do you correct the pramana sharira or the organ body? By creating an internal trigger. ठीक है? तो और दूसरा तरीका, there is no medicine for that. कोई दवाई नहीं है उसके लिए. And there cannot be a medicine. कोई दवाई बन नहीं सकती. So at this point of time, everybody's organ is getting weak. Not even people like you. For youngsters also. छोटे बच्चों के भी organ weak हो रहे हैं. इस वक्त ये जरूरी है कि अंदरूनी काम किया जाए. It is important to work inside and rejuvenate your organ, make your organ strong. Now let's come to the other part, which is marma. Your organ, muscles, bones, they all work together, isn't it? आपका heart, आपके muscles, your nervous system, muscles, bones, they all work together. If you take out heart, you will not be able to move. You will not be able to live.
If you take out liver, you will not be able to live. So they all work together. So there are junctions. ऐसी जगह है जहां पे की मूवमेंट होती है. There are junctions, muscle and nerve junction, muscle and bone junction, two bones and there is a junction. ऐसा ही है ना, दो हड्डियों के बीच में एक जोड़ है. ऑर्गन आपकी आंतों के बीच में, lungs, organs and the external body is connected. ये सब जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं जुड़ी हुई. ये जो junction point है, this junction point of the various organs is called as marma. If this junction point is okay, lubricated and flexible, you can perform better. अगर ये जंक्शन पॉइंट ठीक से काम कर रहे हैं, ठीक से मूवमेंट कर रहे हैं, तो आपका शारीरिक मूवमेंट ठीक से होगा. Your organ function will happen properly. So these are called murmurs. So murmur needs a constant rejuvenation. इनको कॉन्स्टेंटली एक तरीके से मूवमेंट देना पड़ता है. टू कीप इट फाइन, वी नीड टू एक्चुअली make them move in a particular way constantly. For example, I'm giving you another example. If your murmurs are not functioning properly, there are two kinds of circulatory movement in your body. आपके शरीर में दो तरीके का मूवमेंट का, blood circulation and lymph circulation. ऐसे मान के चलिए, just think about it, there are tissues and cells. आपकी कोशिकाएं हैं. The waste product gets thrown out of their walls. वो अपने बाहर अपना waste छोड़ देते हैं. And by movement of tissues and cells, these waste product comes to a certain place called joints or lymph node. अंग्रेजी में उनको lymph node कहते हैं. All your joints are lymph node. आप ऐसे कटकाते हैं तो आवाज आती है ना. If you just tense the joints, there will be a sound. टक से आवाज आएगी ना. क्या हुआ? Gases release हुई. There is a release of gases and toxins. So it only happens through movement. वो बिना movement के नहीं होगा. Blood circulation can happen without movement because there is a pumping organ. एक heart है जो blood circulation करवा रहा है. Lymph का कोई circulation नहीं करवा रहा. It will only happen by movement of the body. So if you move the body in a particular way, these toxins, they go out of the body. There is a constant rejuvenation of cells. Internal environment साफ बनेगा आपका, तभी there will be प्रकृति, न्यू सेल्यूलर फॉर्म, बेटर सेल्यूलर फॉर्मेशन. अगर वो एनवायरमेंट ठीक नहीं होगा तो रॉन्ग सेल्यूलर फॉर्मेशन कॉल्ड, एंड दिस इज कॉल्ड एज कैंसर. गलत सेल बनते हैं तो कैंसर कहते हैं ना उसी को. सो बिकॉज ऑफ एन इंटरनल एनवायरमेंट, कैंसर हैपेंस बिकॉज ऑफ अ कैंसरस एनवायरमेंट. और उसके लिए इफ यू वांट टू कम आउट ऑफ दैट, देन देयर शुड बी कांस्टेंट रिजुवनेशन ऑफ मर्म. तो इसमें हम मर्म, अष्टांग चिकित्सा में there is a part in Ashtang Chikitsa, there is a part called as Anganyasa and Marma Vinyasa, which actually works upon, there is a particular movement in a particular way with a particular kind of breathing. It's a part of Ashtang Chikitsa. Now go a little further. Now everything is ready for functioning. Now tissues, organ, joint, marma, सब कुछ तैयार हो गया. Now you function, you live your life, you do movement, you do function. काम होता है ना. तो फंक्शन, देयर आर थ्री थिंग्स विच आर अटैच्ड टू फंक्शन. तीन चीजें हैं फंक्शन के साथ में जुड़ी, मटेरियल, एनर्जी एंड मूवमेंट. फंक्शन मींस थ्री थिंग्स, मटेरियल, एनर्जी एंड डायनामिज्म. इसी को कहते हैं कफ, पित्त, वात. दिस यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ. आजकल तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी चलती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी. So everybody is educated. You know, at least you must have heard of these words called Vata, Pitta, Kapha. Most of the people do not know what it is. They try to make an idea. But material, energy and dynamism, Kapha, Pitta, Vata. Most of the problem is attributed to dynamism. वात दोष ज्यादातर प्रॉब्लम के साथ में जुड़ा हुआ है. सो व्हाट इज योर जॉइंट प्रॉब्लम? व्हाट इज इट कॉल्ड एज? वात दोष. राइट? मूवमेंट को आप कंट्रोल कैसे करते हैं? व्हाट इज वात? मूवमेंट. वात ऑल्सो क्रिएट्स पेन. सो मूवमेंट, हाउ डू यू कंट्रोल मूवमेंट?
If you want to move your hand, how do you control the movement? अगर आप ऐसे ऐसे तेजी से हाथ हिलाएं, देखिए पीछे, अपने पीछे देखिए, how do you control this movement? By holding your breath in a particular manner. अपनी सांसों को एक तरीके से चलाते हैं इसके लिए. Yes or no? You control your movement by holding your breath. Without holding your breath, you cannot control your movement. So वात दोष से बाहर आना है तो क्या करना पड़ेगा? If you want to come out of vata dosh, what you need to do is control your movement. कुंभक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? There is no other way. If you apply joint pain relief sprays or some gel, उससे क्या होगा? Temporary, you will get a joint pain relief. Temporary, it's little temporary. क्या आपका घुटना ठीक हो जाएगा? No, it will not happen. So if you want to really have a control over the movement of your body, over your life, then you must practice kumbhak. कोई और चारा है नहीं. So dosha sharir ko, if you want to correct the dosha imbalances in your body, the most potent way is kumbhak. Other ways are also available, but they are less potent. There are medicines, all they do vata pitta kapha balance, but to a certain extent. केवल एक extent तक ही कर सकते हैं. They can be a little help, but they cannot be cure, rejuvenation. If you do kumbhak for 3 years, you will become 10 years younger. This is called as rejuvenation. So neuro problem, usually कहते हैं neuro problem. Somebody was talking about so what people were talking about, spondylitis and what else? Neuro problem. Now something called as drop foot, neuropathy, है ना? ये चीज आपने सुना होगा. You must have heard of these things. So neuropathy happens on, you don't have a control. Parkinson, again a neuro problem. Huh? There is degenerative disease, which the doctor will say it doesn't become fine. It doesn't. No, there is no solution for that. There are sometimes autoimmune disorder of nervous origin, for which there is no solution. कोई solution है ही नहीं. So I'll tell you some examples. मैं आपको कुछ example बताता हूँ. So there was a person who was suffering from paralysis. A 65-year-old professor of Delhi University or some associate Delhi University का कोई college है उसमें. So he suffered a paralytic stroke and lost sensation in one part of the body. He started doing kumbhak. In 3 months' time, he regained the sensation by almost 95% on that part. Now another example. There is a marathon runner. She's a lady, marathon runner. She started developing drop foot, uncontrolled legs. She couldn't control her legs. Suddenly, uska marathon सब बंद हो गया. She was almost like stuck at one place. She started doing kumbhak. And after 4 to 5 months, she reported, I am preparing for next marathon. So there was a person who was suffering from myasthenia gravis, where the muscles are not in control. आंखें पलकती रहती हैं, muscles हिलते रहते हैं. They are in always fluctuating mode. He started kumbhak, and in 3 months' time, he reported that it's gone maximum, like it's gone about 80 to 85% it's gone. Another person who was not able to speak for more than 2-3 words, he was not able to speak. Uska voice box related issue tha. It is also a neuro origin. So he started kumbhak. In 4 to 5 months time, he said, I can talk for long now. मैं काफी समय तक अब बोल सकता हूं जो पहले नहीं बोल सकता था. So these are examples of people who have done kumbhak and they have come out of the problem of neuro origin. I'm talking about problems you're talking like Parkinson, paralysis and neuropathy. You can actually revive your
whole nervous system can revive. Let's get to the second last part or the seventh Sharira. It is called as Garbha Sharira. Garbha means a quality. The Sanskrit word Garbha means a quality of environment, an environmental quality. So Garbha fundamentally is called as quality, and the quality can be created by something called as samskara. Samskara is a way of creating quality. So Garbha means quality. Garbha, quality or genetics are correlated. I'm talking genetics. When you say Garbha Sharira, it is your genetics. Your genetics is responsible for your personality, for the quality of your body. How much your body has potential in what direction, in what vertical. It is your genetics. Isn't it? This is called as Garbha Sharira. The Garbha Sharira gives you the genetics. Can you correct your genetics? It has also some relation with what you call as karma. When we say samskara, it is called as related to what you have done. So your genetics is also what you have done. Your genetics is also what you have done. So can you correct your genetics? Yes, 99% of your genetics can be changed. Now the modern research says 99% of the total genetical quality is epigenetics, changeable genetics, variable genetics. You can actually change your genetics. So earlier theory of genetics cannot be changed is now been busted. So now you can change your genetics also. If the doctor says, oh, you have a problem because of your genetics, then tell the doctor, please change my genetics, because modern research says genetics can be changed. But they are thinking of stem cells, which is not the right way to approach genetics. I am telling you, Kumbhak is a way to change genetics. When you do Kumbhak, you are actually applying epigenetic triggers inside the body, which will change your genetics. And that's why people into diabetes, they drop their medicine. People who have blood pressure issues, they don't need a medicine to control their blood pressure. Whatever genetics you say or what is being said in the world today can be changed. But you have to do certain things in a certain way. Only then it will happen. The last part is Shrishti Sharira. Eighth Sharira is Shrishti Sharira. Shrishti means what? In which you are sunk. Like Shrishti for a fish is the sea. एक मछली के लिए समुद्र सृष्टि है. So the water around her is सृष्टि for her. So for human being, the cosmos, ये ब्रह्मांड is सृष्टि. So it applies lot of forces. Na? What is environment? What is universe? Lot of forces acting. Na? You walk on earth in the force which is called as gravity. Gravity pulls you down constantly. Within this gravity, you walk. So you make an effort against gravity and then you walk. There is a very high environment or the pressure of this atmosphere. Atmosphere का pressure है ना आपके ऊपर. उसके बावजूद भी आप move करते हैं, चलते हैं, सब कुछ करते हैं. You do everything. So this is Srishti. The forces of environment is Srishti. Now I am bringing up something very, very unique and important. Now suppose gravity pulls you down. You know this, gravity pulls you down. Why do you grow tall? Gravity तो आपको नीचे खींचता है ना, गुरुत्वाकर्षण आपको नीचे खींचता है. आप लंबे क्यों हो जाते हैं? एक पेड़ ऊपर क्यों उग जाता है? Why a tree grows up? Why a bird flies? Because you must be applying a force opposite to gravity. Yes or no? आप जोर लगा रहे होंगे gravity के विरुद्ध. आप जानते भी नहीं हैं. You don't even know, notice. But you are applying a force opposite to gravity. Suppose कीजिए आपके अंदर this force becomes weak inside you. Gravity के opposite force लगाना कमजोर हो गया. आपको कैसा feel होगा? How will you feel in your body and mind? You'll feel heavy, pulled by gravity. आप उठा नहीं पाएंगे ना, हल्का महसूस नहीं कर पाएंगे. Will not feel light. How will you feel? Heavy. ऊपर नहीं उठा पाएंगे तो नीचे heavy feel करेंगे. Where will the heaviness impact? ये heaviness कहां असर करेगा आपके?
Joint pain, it will impact the joint, yes or no? This heaviness is called as stress, S-T-R-E-S-S. You talk about stress, but आपको मालूम नहीं है stress क्या है. You think situation creates stress. No. Put 10 people in the same situation. 5 will get stressed, 5 will not. It is not the situation. It is your inability to handle a situation creates stress. आपकी क्षमता नहीं है अगर किसी सिचुएशन को हैंडल करने की होगा. So are you doing anything to increase your capability and the capacity to handle situation? No, you are not doing it. So I talked about one force. एक फोर्स के बारे में बात किया. The upward force is called उदाना. In कुंभक कलाचार, in कुंभक विज्ञान, we call it उदाना. इसको हम उदान कहते हैं. Have you heard of this word उड़ान? उड़ान सुना है नाम आपने? उड़ना, उड़ान. This has come from the root udana. That means opposite to gravity force. There are 84 forces which you are struggling every moment through. 84 अलग-अलग forces में आप काम करते हैं. Your organ function according to these forces. So which force has gone weak in you because of which you have got into one problem? आपके अंदर कौन सा force weak हो गया जिसकी वजह से आप problem में आ गए? That is what we diagnose in प्राण शक्ति diagnosis. यही प्राण शक्ति diagnosis है. We find out the force which has become weak in you, and because of that you have got into one problem and then another and then another and then another. This is the root cause. So we do prana shakti diagnosis, and in the 9 weeks you learn the basic module and you get an extra class where the whole module get customized according to your system. 9 हफ्ते तक आप एक module सीखते हैं. There are 3 things in that module which actually takes care of all these 8 aspects. ये 8 चीजों का वो ध्यान रखता है. 3 चीजें हैं. The first one is called as Anganyasa. The second one is called as Hatha Vinyasa. The third one is called as Kumbhak therapy. So in 9 weeks, you learn this module of 3 steps, and then you get an extra class of customization where we diagnose you and customize the whole module according to your system and problem. This is Ashtaang Chikitsa. So it takes care of all the Sharira. Sharira means body and mind complex. Prakriti, Vikriti, Sankhya, Pramana, Marma, Dosha, Garbha, Srishti. And it's a cycle. It's a cycle. So if you work upon the body, see, you will never get a magic pill. If you wait for eternity, you will not get a magic pill. कोई magic दवाई नहीं बन सकती शरीर के लिए. Why? Because this body is first of all not designed for chemical medicine. Is your body designed for chemical medicine? No, your body is not designed for chemical medicine. जब आप एक पेट्रोल की गाड़ी लेते हैं तो डीजल डालते हैं उसमें. Would you put diesel into a petrol vehicle? No, never. Common sense, it is designed for petrol. So when your body is not designed for chemical medicine, where does this common sense go? ये common sense कहां चला जाता है इस समय जब हम अपने शरीर को इस्तेमाल करते हैं? That is why more medicine, more disease in the last 50 years. Enough example, isn't it? So you must work upon this. Body is magical. Let me give you this guarantee. ये शरीर बहुत magical है. ये ठीक करता है अपने आप को. This is the only gadget which is self-corrective or it corrects itself. ये खुद को ठीक करता है. आप मौका दें इसको. You empower your system and you'll see magic happening in your life. So it is important. Wherever you invest your time, money, focus, that thing grows. आपने दवाइयों पे इन्वेस्ट किया पिछले 50 सालों में, कितनी बढ़ गई? वो आपको रूल करने लग गए. आप हेल्थ पे इन्वेस्ट कीजिए. Just invest in health and you'll see your health will improve. Not only your health, the health of next generation will improve. So it is our responsibility that we focus on this beautiful system that we have been given or gifted with and transform our lives, make our lives better. So I'll stop here. यहाँ पे मैं रुकूंगा. So the team will take you forward. Team आपको आगे बताएंगे.
Yeah. Just 2 seconds and Rachna ji will be with all of you. Okay. Neha, do we have any live testimony? Thank you so much for listening to Swamiji's video patiently. Now I would like to invite a live testimony. Mr. Vivekanand Shenoy, sir. Vivekanand Shenoy, sir. Are you there? Yes, I am here, madam. Okay. Namaste, sir. Thank you for joining us. Okay. You can share your journey on Ashtaang Chikitsa, how it was before you joined, and now how it is. I had a backache with muscular pain on the lower back, L4, L5. So I have tried to strengthen my muscle by yoga, cryotherapy, and Ayurvedic. I have done so many. But for the last 3 months, my pain is about 30% cured. But still I had a pain. I was not able to. I have gone to so many doctors, physicians, the spine specialist, and I was not. They are telling that you don't have any problem. For this reason, I had gone into depression. So I have tried so many doctors. Then one of my friends recommended Kumbhak therapy somewhere in August. He's Mr. Nair. He's from Cochin. He told me join Kumbhak and all your problem will be solved. So on 5th September, I have joined this course, and 5th September onwards up to today, whatever you are teaching, I am doing meticulously without any pain. And initially, my pain was reduced. Now almost 90%, I don't have any muscular pain now. About 90% pain is reduced. Still, I have that, since I have that depression, it is a psychological pain. Sometimes I feel that I have pain. So only thing is, while exercising, if doctor has advised me to don't go forward bending. On 1 or 2 occasions, while doing exercise, I have bent forward bending I have done. That's why I asked Pooja madam. She told me don't go for forward bending. As it means minimum you do minimum, or you use that this thing. What is that band for tying back? That I have not tried. But afterwards I have started minimum bending so that there is no pain. Now almost I'm happy now. I can have sleep and I can walk. I can go anywhere. But 90% is cured, because sometimes if my body is strained, sometimes pain will come, but it will go within 1 or 2 hours after exercising. Now I am doing this Kumbhak without fail. About 2 hours I am doing in the morning. Sometimes I am doing exercise. If you are taking 7 times, if you are telling 7 times, 12 times, I am doing some extra so that it can cure my disease. That is the, now I am very happy. I'm going out without any support, and I have a right sleep in the night, and I don't have any problem. But I have to continue with, and see, this is the improvement in the last 5th September. I mean, it is hardly 30 plus 45, 46 days. 46 days. Today is 45th days today. So to me, I am happy that there is a lot of improvement in my back pain. So muscle pain is improved. Improved now. Now there is hardly any pain, but sometimes it may be because of psychological. Because I have, because for the last 3 years I was suffering. No, that's why. So what is pain? So I have forgotten. I have without pain. Okay, I'm happy. Thank you so much, sir, for sharing your
views on Ashtaang Chikitsa. Now I would like to invite Vicky Mulchandani sir for his experience of Ashtaang Chikitsa, please. Vicky sir. Vicky sir, are you there? Hello. Yes, ma'am. I'm there. Yes. Thank you so much for joining us, sir. Thank you very much, ma'am. Okay. I am Hari Mulchandani actually. Vicky मेरा pet name है. Oh, I'm so sorry, sir. नहीं, ma'am. It's okay, ma'am. अच्छा, ऐसा है कि actually मैं Sir, please unmute yourself, sir. आप mute हो गए. सर अनम्यूट करना पड़ेगा सर. नहीं हो रहा है क्या? एक मिनट. आप कर सकते हैं ना सर अभी ट्राई करिए. yes, ma'am. हो गया हाँ अभी. सर, you're unmuted. Yeah. मैंने स्टार्ट किया था जैसे मैंने YouTube पे देखा था कि अष्टांग चिकित्सा के बारे में, तो मैंने काफी पहले कोर्सेज किया हुआ है काफी अलग अलग जगह से, लेकिन जैसे मैंने ये स्टार्ट किया मुझे पहले तो नी पेन था, उसके बाद इम्यून सिस्टम मेरा काफी लो था. एवरी मंथ में मुझे 2 बार फीवर आना, सर्दी होना, खांसी होना, ये कॉमन था आफ्टर कोविड के बाद ही मुझे बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम होने लगा था. और स्किन प्रॉब्लम हो रहा था, स्किन फट रही थी, तो ये सब काफी प्रॉब्लम आ रहे थे, जॉइंट पेन्स. तो जैसे मुझे अभी खाली 1 ही महीना हुआ है, 4th वीक अभी मेरा चल रहा है, वात मैंने कंप्लीट किया, अभी पित्त में हूँ. इतना रिलीफ हुआ है काफी. जैसे मैं पहले कुछ भी सीढ़ियां चढ़ता था, स्टेयर्स, तो उसमें मुझे प्रॉब्लम आता था, थोड़ा पेन होता था दोनों नी में. अभी 0 पेन, कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसके बाद इम्यून सिस्टम इतना अच्छा हो गया है अभी कि मैं कोई समझो मेरे बाजू में कोई खांसता भी था ना, तो इमीडिएट मुझे उसका असर हो जाता था, नेक्स्ट डे मैं बीमार हो जाता था. अभी वैसा नहीं हो रहा है बिल्कुल ही. मैंने काफी ये ऑब्जर्व किया है. मेरे घर पे मेरी वाइफ अभी 4-5 दिन से बीमार है, मैं साथ में ही हूँ उसके, लेकिन टचवुड कुछ भी नहीं हुआ है. तो बार बार मुझे ये सब प्रॉब्लम हो रहे थे काफी. और स्ट्रेस लेवल कुछ कोविड के बाद तो हर किसी को हुआ था, मेरा भी काफी बड़ा हुआ था, वो भी बहुत ज्यादा रिलीफ मिला है मुझे. और कुंभक तो मतलब माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा है एकदम करने में. तो थैंक यू गुरु जी, स्वामी जी, बहुत अच्छा ही. Thank you, Hari sir, for joining Thank us you and very sharing your experience. Thank you, ma'am. Thank you. Now, without wasting much of our time, I would like to ask Anil ji to please share the program details. Anil ji, over to you. Yes, just give me a few seconds. Yes. रचना जी, मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको? Yes. Okay. Okay. So let's get to know the details, which a lot of you are waiting for. कि क्या डेट्स होंगी, क्या टाइमिंग होगा, एंड द बेस्ट पार्ट इज फीस क्या होगी. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज रहती है सभी के दिमाग में. सो वील गेट टू इट वेरी फास्ट. First of all, this is a guided program conducted online by trained Kumbhak mentors. These mentors are trained by Swamiji, so they'll be guiding you inside these classes, live classes. Okay, and it's a guided program. As Swamiji already told you in the video, there are 3 modules in the full program: Module 1, Module 2, and Module 3, or you can call them Vata, Pitta, and Kapha. To balance the Vata, Pitta, and Kapha of the body, these 3 modules, you know, the whole program is comprised of these 3 modules. 3 modules जो हैं उससे पूरा program बनता है. Lot of people ask that which module they have to choose. There is nothing to choose. You have to choose all. Okay. So individually there is no choice. It works like a combination lock.
एक कॉम्बिनेशन लॉक की तरह काम करता है, आप चूज नहीं करते हैं, यू हैव टू कंप्लीट ऑल 3, आपको सभी मॉड्यूल्स पूरा करना होता है। ईच मॉड्यूल इज ऑफ 21 days और 3 weeks, so total duration 9 weeks. But again here you see 9 plus 1, which is 10 weeks. Why 1 week extra? You'll get to know in a short while. There'll be 2 live classes every week, out of which one will be the main class or the learning class, and one will be the practice or the mentoring class. What are the next steps? आगे आपने क्या करना है? You pay the program fee, and we have a special webinar pricing for people who have stayed back, and then you fill up the participant onboarding form so that we can create login credentials for you for accessing the course. We'll talk about this in detail. And then you start your classes starting with module 1, then module 2, and ultimately module 3 also. Total classes, again 6 classes in each module. So 3 modules, 6 into 3 makes it 18. But here you see 1 extra class for customization class. What is this customization? Swamiji talked about it in the video also, but we'll talk about it a little more. So the total engagement is of 10 weeks. Total जो आपके साथ engagement रहेगा वो 10 हफ्ते का रहेगा. Class start date for batch 103. We'll be starting the batch 103 on 31st October. Normally we start every batch on every Monday. So going by this, we should have started by 24th, but 24th being Diwali. So this will start on 31st October, the next Monday after Diwali at 6:30 p.m. And then after that, module 2 will start on 22nd November, and then module 3 on 14th December. Mentor classes or the practice classes. Mentor classes will be on Thursdays for module 1. For module 2, the mentor classes will be on Fridays, and on Saturdays for module 3. We'll share all these details in chat as well as in WhatsApp group also, so you need not worry. What is the class experience like? These are live sessions, as you must have known by now. Live sessions होते हैं, ये Zoom ऐप के ऊपर कंडक्ट किए जाते हैं. Mentors watch all the participants while doing the practices, so that they can give you feedback if you're doing the kriyas correctly or not. And then you get written instruction in English and Hindi. Hindi और English दोनों में आपको लिखित निर्देश भी मिलते हैं. And then session recordings. जो क्लासेस हैं वो सभी रिकॉर्ड की जाती हैं और आपको अवेलेबल कराई जाती हैं थ्रू द कोर्स डैशबोर्ड. एक्स्ट्रा काफी चीजें होती है इसमें. मेंटल प्रैक्टिसेस होती हैं, आपको डायरेक्ट पर्सपेक्टिव मिलता है, सिंपल डिटॉक्स प्रोसेस होते हैं, एंड अ लॉट ऑफ नॉलेज इज शेयर्ड विद ऑल ऑफ. Yearly expenses, let's look at how much you may be spending to just manage your disease. Just before I come to the program fee, I'd like to just take your attention to the kind of money that we could already be spending just to manage the disease that we are into. These are yearly figures. साल भर का शायद इतना खर्च कर रहे होंगे. Doctor fee you could be spending between 6,000 to 12,000 every year. If you are into physiotherapy, another 12,000 to 30,000, and medicines may cost another 15,000 to 30,000. Total 33,000 to 72,000. A lot of us may already be spending, and then there are side effects of allopathy treatments, so we won't talk about that so much here. Why I'm sharing this is because when I announce the fee, the program fee, that will look so little in front of this, and with the permanent solution, a chance for a permanent solution without taking anything from outside into your body, no medicine, nothing. So just wanted to talk about this. And I'd also like to talk about, it's also important to know who this program is not for, so that it becomes clear who this program is for. ये थोड़ा हम बात करेंगे कि ये किन लोगों के लिए नहीं है, ताकि ये क्लियर हो सके ये किन लोगों के लिए है. This is not for those people who are looking for a magic pill and want results tomorrow only. Magic pill से मतलब ये है, because since childhood we've been so used to taking medicine, especially allopathic medicine, because we've been taking it from childhood. If you get a cough, cold, even the smallest of problems, which can get cured if you let it be, वो अपने आप ठीक हो सकती हैं, but आदत ये बन चुकी है. इसलिए आप देखते हैं कि डिब्बे के डिब्बे भरे होते हैं हमारे पास दवाइयों के.
बच्चों को बुखार जुकाम कुछ भी होता है, उनको दवाई पिला देते हैं, हम खिला देते हैं. सो वी आर यूज्ड टू इट. तो इसलिए आदत बन चुकी है. तो अगर आप उस तरीके का कुछ सोच रहे हैं तो ये थेरेपी वैसा कुछ नहीं है. तो उन लोगों के लिए नहीं है जो ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं कि कल ही उनको एकदम से आराम आ जाएगा, राइट. एंड दिस इज नॉट फॉर दोज हु आर नॉट रेडी टू वर्क ऑन देयर बॉडी. अपने ऊपर जो काम, क्योंकि उसमें टाइम आपको देना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, क्रियाएं करनी पड़ेगी, कुछ अनकंफर्टेबल भी हो सकते हैं आप उस दौरान. तो अगर आप तैयार नहीं हैं तो ये शायद प्रोग्राम आपके लिए नहीं है. एंड दिस इज नॉट फॉर दोज हु कैन नॉट इन्वेस्ट 60 to 70 minutes, maybe 90 minutes also every day on themselves. ये लास्ट पॉइंट से रिलेटेड है. you'll have to spend time because this is something new. So when we learn something new, it takes time. If you're not ready to do this, then this is not for you. And this is not for those who are impatient. We understand that when we are in pain, when we are in a disease, patience जो है कम हो जाता है. We become impatient. But despite this, I wanted to just clear it up front that you'll have to be patient. जल्दी आप करेंगे तो शायद solution आपको नहीं मिल पाएगा. And this is not for those who are looking for a free treatment or just some tips. Webinar में ज्यादातर लोग जो होते हैं, about 70 to 80% are people who just come to get some tips. This is not about giving you tips because जो थेरेपी है, जो परमानेंट सोल्यूशन है, वो टिप्स के बेसिस पर नहीं होता है. इफ यू वांट टिप्स, देयर आर thousands and thousands of videos on YouTube. But I just want to tell you that what is the disadvantage of a tip, because a tip is just something which is given to just one person and everybody does the same. So how can one thing apply to all? The other thing is, a therapy or a permanent solution has to start from some place and end someplace. Has a lot of things have to be taken into account so that a holistic healing can happen in the body. A free treatment ye nahi hai because we have a team of 12 people. Now we'll have 14. 2 people have joined recently. So this team will take care of all the participants with everything. I'll talk about it later on also. So it can't be a free treatment because we have a team who needs to be supported. Their salaries, everything, and the classes, conducting the class, lot of expenses are there. So can't be offered for free. So आप इसे मुझसे मत पूछिएगा वेबिनार ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ये फ्री क्यों नहीं. Now, what all you get in this program? This is very amazing. Prana Shakti diagnosis for root cause determination. This alone in itself could be worth the total cost of the program, because most of the therapies that we see in the market, they do not find the root cause or they cannot find the root cause. उसकी जड़ क्या है, डिजीज की जड़ क्या है, बीमारी की जड़ क्या, वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं. और नहीं पहुंच पाएंगे तो आप कैसे सोल्यूशन करेंगे? आप सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स करते रह जाएंगे और सोल्यूशन नहीं मिलेगा. सो प्राण शक्ति डायग्नोसिस स्वामी जी करते हैं और इसमें थोड़ा मैं बताता हूँ एग्जैक्टली होता क्या है. इट्स अ नॉन मेडिकल डायग्नोसिस फर्स्ट. सेकंड, दिस इज एन ऑनलाइन डायग्नोसिस. अब काफी लोग सोचते हैं ऑनलाइन डायग्नोसिस कैसे होगा. यू विल गेट अ फॉर्म in which you will be asked to do some experiments on your breath and on your emotions, and you have to note those down in the form. Second thing that you have to do is to write about your problem in detail. And the third important thing that has to be done is you have to upload your selfie photograph in which your face should be clearly visible, but there has to be no specs. आपको चश्मे नहीं होने चाहिए उसमें, and in case of ladies, no makeup also. When these three things reach Swami, able to know which force out of the 84 forces has become weak, due to which you landed in your current situation. If you remember, Swamiji talked about 84 forces in the body in the video. So he is able to find out which force has become weak, and based on that, a diagnosis or a therapy customization is done, which I'll be talking about later. Weekly one main class of 60 to 90 minutes. Why 60 to 90? 60 is the actual duration, and then we take up questions. So it extends to about 90 minutes overall. Then same for practice class also, 60 to 90 minutes. Online course access for 6 months. Remember I talked about the classes being recorded. So the access to these class recordings will be available to you for 6 months through a login ID and password. After the program is over, still 6 months the recordings are there with you.
So that is enough time to learn all the kriyas by heart. And then videos of all kriyas done in the class. How this is different from the class recording? In the class recording, the duration is of 60 to 90 minutes for howsoever time the class was conducted. But here, videos of all kriyas is given separately. Let's say the one kriya is taking 20 minutes, 10 minutes, 2 minutes. So separately, all these kriyas are provided to you in separate videos. Then written instructions in English and Hindi. You can take, you can download these and take a printout and follow these for doing your daily kriyas. Then private WhatsApp group to ask doubts, questions 6 days a week. 2 days of the week, you'll be live with us. The remaining 5 days, when you're practicing alone, and if you got a question that time, if you get a doubt that time, you have to ask in this WhatsApp group or the class WhatsApp group. Our mentors are added in the group, so they'll be answering your question, clearing your doubts, and you guiding you step by step. So this is how the support is available. Sundays, the mentors are off, weekly off. So 6 days, the support is there for you through the WhatsApp group. Then individual participant progress tracking. You get a form to fill up every day, a very short form about your condition, so that we can track if you're improving and if you're making progress or not. Okay. And then therapy customization for each participant in the 10th week. Now, this is the point which I wanted to talk about a little more in detail. If you remember, the first point I talked about, it was Pran Shakti diagnosis. Okay. So based on this diagnosis, all the participants' therapy will be fine-tuned and customized as per the diagnosis, which means every participant will get different kriyas based on their diagnosis, which will be customized by Swami. Okay, so this is what we mean by customization. And then extended support for 30 days after the program is over. After the 10 weeks, you get another 30 days. Because a lot of people may have missed their classes, and they may not, so that they don't feel how to go about it, so that they don't feel lost. We have a 30 days of extra support. Okay, all included in the program. Now the price that you are waiting for, the program fee is 14,500. It includes everything, all the 18+1, 19 classes, Pran Shakti diagnosis, therapy customization, support, everything all inclusive. But as I promised you that there'll be a special webinar pricing for people who are still here. What is that? Just 6,500 for the complete program. 9 weeks plus 1 week extra for the customization class, and then everything which I just talked about, diagnosis, classes, support, all in 30 days of extra support, all is included. We made it so affordable so that most of the people can at least try it and get the benefits and get on their path to a permanent recovery. How to enroll? You pay the program fee, that's step 1. Step 2 is to post the payment receipt in the WhatsApp group. You are in the WhatsApp group, you post the WhatsApp receipt in the WhatsApp group. Then you fill the participant onboarding form, link of which Neha will be sending on your personal chat. And then you join the class WhatsApp group and start classes. Payment methods we'll share in the group as well as in chat here. I'd just like to stop here for some time and talk about the super team that we have at your service. Because this is the team that will be supporting you, that will be guiding you on a daily basis. We have Rachna Shrimal Botra, she's the program director and the host of this webinar. Shalini Bhagwat, she's the class manager. She takes care of the batches, timings, shifting and everything related to the classes. Pooja Chopra, she's the Ashtaang mentor. Then Ranjana Swain, another Ashtaang mentor. Sukesh Raj, Ashtaang mentor. Then we have Radi Gupta ji, Soni Chabria ji. There are also Ashtaang mentors. And recently we have Aruna ji. She joined just recently. So she's another mentor. So we have a proper enough number of mentors so that we can take care of each and every participant. Okay. Then we have Neha Upadhyay. She is the enrollment in charge, and she'll be the person you'll be talking to the most before you start your classes, related to the fee, the links, and everything. And then Anil Jha, that's me. I'll be answering a lot of your questions inside the webinar group because Swamiji will be here to answer all your questions, but due to shortage of time,
He may not be able to take up all the questions, but you do not have to worry. You post your question. If your question is not taken now in the webinar, you can post in the WhatsApp. So I'll be answering all those questions. Then we have Himanshu Reddy. He's the technical person who takes care of all the things related to the course upload, the video upload, the written instructions upload, the app access. He'll be the person you'll be getting help from. And then we have Anita ji. She is the personal, she's responsible for the personal support. She calls about 20 to 25 participants every day. So she'll be talking to each and every participant individually also. So if there's some problem that you're facing in the group, in the classes, you can talk to her and she'll be helping you with sorting out that problem. So what I want to impress upon you is we have a proper team in place, so you won't feel lost. A lot of people have this question, they have this doubt that it's an online program. So will this be even possible? So let me assure you, we have, this is the 103, 103 batch number start ho raha hai. So we've started a lot of batches and we are experts at training people through online only. And people are getting results, they are getting benefited. So you need not worry about this. So with this, I come to the end of my part. I think Swamiji has joined and he'll be there to answer all your questions. Thank you. Namaskar. Thank you so much, Anilji, for sharing the program details. I will now be taking up the questions one by one. So people who have raised their hand, I will definitely be taking up your questions. Let me complete the chat questions and then I'll take you up, okay? So I'll just put Swamiji on, yes. Namaste, Swamiji, good evening. Okay. I'll just take up the chat questions. Okay, Jayashree ma'am writes about Bell's palsy of left side of face since childhood. What do you mean by palsy? See, unless and until you understand what is the problem in your own terms, in your own understanding, अपनी समझ से अगर नहीं समझेंगे तो you'll not understand how to come out of it. आपको कभी पता नहीं चलेगा कैसे निकल के आना है उससे. तो आपको पहले अपनी समझ में लाना पड़ेगा. पहली चीज पैल्सी, ऐसे अंग्रेजी वर्ड बहुत सारे बना देते हैं, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड इट थ्रू योर ओन सेंस. देयर इज अ पार्ट विच इज नॉट फंक्शनिंग. अब ये बेल हो चाहे कोई भी हो, किसी भी आदमी के नाम पे रख देते हैं, बट ये अ पार्ट विच इज नॉट फंक्शनिंग, एक ऐसा हिस्सा जो काम नहीं कर पा रहा, जो आपके कंट्रोल से बाहर चला गया. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? How do you control your organs and your body and everything? जो आपका शरीर है उसको कंट्रोल कैसे करते हैं? Nerves से, नसों से, nerves से. So nerves, either it has become non-functional or has got damaged. कुछ तो होगा, नर्व के साथ में कोई प्रॉब्लम हो गया, तभी वो पार्ट काम नहीं कर पा रहा. It has gone beyond your control. So दो चीज आपको बताऊंगा. पहली चीज, see how do you control things apart from your nerves, because you don't know you have nerves. आपको मालूम भी नहीं है शायद आपकी नसें, लेकिन आप कैसे कंट्रोल करते हैं? In your experience, how do you control things? How do you control things? So try to pull somebody. किसी को खींचने की कोशिश करें. हाँ, हाथ को ऐसे पकड़ के खींच के रखें. Pull and hold. खींच के रखें. How do you control this? Breath hold. सांस रोक के कंट्रोल करता है. So one aspect is, if you dance करते हैं, हाथों को हिलाना है, सही तरीके से हिलाना है. It's by variable amount of breath hold that you control things. सांसों को अलग अलग अनुपात में आप रोकते हैं. तो पहली बात, एक सिंपल सा इसका निदान क्या हुआ कि you don't have your breath in your control. पहली चीज, सरफेस पे देखिए कि आपका ब्रेथ होल्ड फैक्टर बहुत वीक हो गया. ब्रेथ होल्ड फैक्टर आपका वीक हो जाएगा तो ऑब्वियसली इट ऑल्सो रीजेनरेट्स
टिश्यूज इन योर बॉडी. ध्यान से सुनिए, आपने तो कैमरा ऑफ कर रखा है, कैमरा ऑन करें तो एक थोड़ी बात करें, शक्लें भी देखें एक दूसरे की. हाँ, इन्वॉल्वमेंट इज कॉल्ड लाइफ. इफ यू डू नॉट इन्वॉल्व, डोंट थिंक अबाउट लाइफ. So regeneration also happens because of that. So if you lost breath hold capacity of your body, शरीर की अगर सांस रोकने की क्षमता आपकी कम हो जाती है, तो externally you lose the control, but internally you lose the control by degeneration. अंदर कैसे कंट्रोल लूज करेंगे? Degeneration will happen more, regeneration will not happen more. आपके शरीर में नई चीजें नहीं बन पाएंगी ठीक से, तो डीजेनरेशन तो चलता रहता है. यू कांट स्टॉप डीजेनरेशन. दिस इज समथिंग यू कांट स्टॉप. एक चीज पक्का है सबकी लाइफ में, ये मान लीजिए, डेथ इज 100% श्योर. और कुछ भी श्योर नहीं है, डेथ इज 100% श्योर. सो डीजेनरेशन इज 100% श्योर. नाउ द ओनली क्वेश्चन इज हाउ मच यू कैन रीजेनरेट. आप कितना वृद्धि कर सकते हैं. इसको क्या कहते हैं? Please understand, there is a word in Hindi or Sanskrit. It is called as dhana. अभी धनतेरस मनाने वाले हो ना? धनतेरस. What is dhana? Dhana means addition. Rina means subtraction. So dhana means addition. This addition factor in your body is called as Dhanvantri. He is the God of health. God word अच्छा नहीं होता. देवता is the right word actually. God doesn't mean anything. But he is the devata of, he is the force of health. So if there is regeneration, that means if you can regenerate tissues, धन कर सकते हैं अपने अंदर, then your health will be fine. Otherwise it will deteriorate और खत्म हो जाएगा. And in terms of your experience, how do you control? How do you pull something? By holding your breath. So holding your breath is your Dhanvantri or your Lakshmi. If you lose it, you lose the health, you lose money and whatnot. Bahut kuch. So two things I have told you. One, your breath hold is weak. You have to increase it. The palsy will सबसाइड, कम डाउन, नीचे आ जाएगा, वो ठीक होने लग जाएगा. रीजनरेशन फैक्टर बढ़ने लग जाएगा आपका. सो इफ द टिश्यू रीजनरेट्स, इफ द नर्वस सिस्टम रीजनरेट्स, यू विल स्टार्ट गेनिंग कंट्रोल ओवर दैट. एंड वी हैव मेनी पीपल हु हैव लॉस्ट कंट्रोल ऑफ मेनी मेनी ऑर्गन्स. बहुत कुछ उन्होंने अपने शरीर में कंट्रोल खो दिया. लाइक दे लकवा मार गया एक साइड का, एंड दे got it back, the sensations back by more than 96%. Drop foot ठीक हो रहा है. Lock jaw, voice issue, myasthenia gravis and whatnot. Wherever you lose control of your body, the nervous degeneration, neuro degeneration, neuropathy in diabetes. So they start gaining control over limbs, not only control, regenerating the very nervous system. This is the only way through which you can regenerate your nervous system, and you will get control back or sensations back in an area where you have lost sensations, right? तो एकमात्र तरीका है, और कोई तरीका नहीं है आपके पास में. Okay, can a Milton Sastry, I don't know, so I think sir, can a CABG person do the kumbhak for regeneration of scar tissue of heart and knee pain? Grafting or bypass, ठीक है ना? If it is done, अगर bypass, पहले first of all bypass is not scientific, ठीक है ना? bypass आपका हार्ट खुद ही कर लेता है. bypass से कोई फायदा नहीं होता. Let me tell you, nothing good happens with bypass. Everything bad happens with bypass. So you lose the age of your heart, obviously. ये मॉडर्न मैं रिसर्च बता रहा हूं आपको, मॉडर्न रिसर्च बता रहा हूं, मॉडर्न एलोपैथिक रिसर्च बता रहा हूं. So
even if it has been done, एक ग्राफ्ट आपका वहां पे लगा दिया गया है, your heart already, everybody's heart has collaterals. कोलैटरल मतलब जैसे बाईपास रोड होता है ना, एक शहर को बाईपास कर देता, तो फॉर एवरी आर्टरी इन योर हार्ट देयर इज अ पैरेलल आर्टरी विच इज नॉट ओपन. वो वेट कर रहे हैं कि इफ दिस गेट्स ब्लॉक दिस विल ओपन अप, बट एनीथिंग विच ओपन्स अप requires a little bit of time and an effort. The effort creates pain. और हमको दर्द के लिए इस दुनिया में भयंकर डरा दिया गया. हाँ कि नहीं? आपको डरा दिया गया इतना कि एनीथिंग, एनी पेन हैपेंस, यू थिंक हार्ट अटैक विल हैपन. हार्ट अटैक से कुछ नहीं होने वाला. लोगों को सैकड़ों हार्ट अटैक होते. इफ यू टेक मेडिसिन यू विल नॉट सर्वाइव मोर देन 3 हार्ट अटैक्स. इफ यू डू कुंभक यू कैन सर्वाइव 100 हार्ट अटैक्स. हार्ट अटैक से कोई मरता नहीं है. लेकिन हमने ये काम कर दिया. वी हैव डन so much of intervention in our body that the body is not ready to take over. आपका शरीर ना पीछे हट गया, कह रहा है कि भैया तुम ही करते रहो जो करना है, ठीक है ना. Now I will not do this. Nobody died of a heart attack like because of heart disease 100 years back. For millions of years, लाखों सालों से कोई भी हार्ट अटैक से नहीं मरा. Of a heart disease, of a shock is a different thing. शॉक के कारण हार्ट अटैक हो वो एक अलग चीज है, मगर हार्ट डिजीज है ब्लॉकेजेस के कारण और सम अदर थिंग है ना, तो उसके कारण लाखों सालों तक कभी नहीं हुआ हार्ट अटैक. टुडे ओनली वी आर गेटिंग, इन द लास्ट 30 to 50 years we are getting so much of our, it has become number 1 cause of death. So what has happened? Let's understand. दोबारा से वापस आते हैं. Let's get to basics. What has happened? क्या हुआ? पहली बात तो ब्लॉकेजेस से कोई प्रॉब्लम नहीं होता. More the blockages, you are better off. Less blockages can cause some harm. 30% block, 40% block से कुछ नुकसान कभी हो सकता है if your heart is not strong. 90% block, 95% block, 80% block, no risk. ऐसे risk नहीं होता. हार्ट ब्लॉक अगर आपका आज 95% है तो कल भी तो 95% था. yesterday also it was 95%, 1 week back also it was 95%, 1 month back also it was 95%. Why didn't you get heart attack then 6 months back? Because of blockages heart attack doesn't happen. It happens because of clotting से होता है. आज clot बन गया वहां पे, and clotting is a protective mechanism. आपको बचाने का तरीका है ना clotting. Why it is getting clots? Why you are getting clots inside the body? It should happen outside the body. Why you are getting inside the body? Because every time you increase the risk, clot happens to protect you. तो आप जो दवाइयां खा रहे हो ना, you are increasing the internal risk of your body, and because of that the body will try to protect itself by thickening the blood. तो आप रिस्क कम कर दो. आप अंदर जो दवाइयां खा के, बचपन से दवाइयां खा के रिस्क क्रिएट कर रहे हैं ना, द बॉडी ट्राइज टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम दैट रिस्क. दैट इज अ क्लॉट. इट कैन ऑल्सो हैपन ड्यू टू अदर रीजंस, बट दिस इज प्राइमरी. मैं सबसे बड़े अम्ब्रेला की बात पहले कर रहा हूं. सो यू हैव लॉस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ योर हार्ट फंक्शन. हार्ट फंक्शन का स्ट्रेंथ कम हो गया तो the body will increase the blood pressure. The body will try to increase the blood pressure by increasing the clot also. जब आप पानी छिड़कते हो and your pressure is low, to increase the throw of your water, what do? क्या करते हैं आप? आगे lumen को block करते हैं ना. You press the lumen, so that's how you increase the pressure. Heart will, if you don't have a strong heart, how will heart function without pressure? If the pressure is going down, it will create blocks to increase the pressure. So it's a protective mechanism. You increase the strength of your heart, the blockages, you won't get any blockages, or there will be only healthy blockages, because blockages are mostly, in a natural sense, it is healthy. You will never get a heart attack. So increase the strength of heart. How do you increase the strength of heart? बाहर से तो आप food, with medicine, you can't increase the strength of heart. You will have to work upon your heart.
कुंभक इज ऑल अबाउट वर्किंग अपॉन द ऑर्गन्स. हम ऑर्गन्स पे काम कर रहे हैं. So there is a kumbhak which increases something called as dakshinagni. There are two factors which causes something called as blood pressure rise, and you are not able to come down, and weakening of heart. Dakshinagni, Vyana, Shakti. These are two factors. So kumbhak increases both of them. If you do kumbhak, you will not need any other CABG or angioplasty or any other operation. You'll see the tendency of blockages will come down and the life of your heart will improve. So can you do kumbhak? You have lost the kumbhak capacity of your body. So what to do? What else can you do? अगर आपको हार्ट डिजीज आया तो you have lost the kumbhak capacity of your body. So what to do? Increase the kumbhak capacity. भाई आपको बैसाखी दे देते हैं, बैसाखी देने से आपको पांव थोड़ी मजबूत हो जाते हैं. That is not a treatment. A wheelchair is not a treatment. A stent is not a treatment. भाई व्हीलचेयर पे बैठ के आपके पांव मजबूत हो जाएंगे क्या? So what is the way to come out of a wheelchair or stretches? What is the way to come out? You make your legs strong. So you make your heart strong. How do you make your heart strong? Dakshinagni. If your kumbhak capacity increases, your heart will be the first thing which will become strong. So after doing kumbhak with your own capacity for 6 months, agar 6 mahine kar liya, you reduce the risk of any kind of a crash by almost 80%. This is what kumbhak can do. So it's huge. तो जितने भी हार्ट के डिजीज हैं उसमें कुंभक करना चाहिए. बट दिस प्रोग्राम इज फॉर न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम. If you have those problems and along with that, if you have any heart issue, join this program. If you just have a heart issue, we have a different program. Share your number with heart issue in bracket, will guide you to the right program. Okay, Shweta ma'am writes about frozen shoulder and cervical pain. Frozen shoulders. Okay. 2 तरीके से समझाता हूं, बड़े आसानी से समझ में आएगा आपको. हर चीज को अपने समझ में लेके आइए, फिर आपको पता चलेगा what is the solution. Frozen shoulder means what? Anything which becomes cold becomes frozen. Yes or no? आप किसी को फ्रोजन फूड का मतलब क्या होता है? ठंडा. ठंडा ठंडा मतलब उसको ठंडा कर दिया गया. You have frozen that food. So if you touch a young person, एक जवान इंसान को छू के देखिए, एक बूढ़े इंसान को छू के देखिए, what is the difference? There is a difference of temperature. A young person is warm. एक जवान इंसान का शरीर जो होगा गर्म होगा और एक बूढ़े इंसान का शरीर ठंडा होगा. What you have lost or what do you lose through ages? एज आपकी बढ़ती है तो क्या खोते हैं? आप शरीर की गर्मी खो देते हैं. सपोज आपकी एज ज्यादा नहीं, योर एज इज नॉट दैट मच एंड यू आर अ कफ प्रकृति पर्सन. कफ मीन्स व्हाट? एनीथिंग अबव योर चेस्ट इज कफ. आपकी प्रकृति ही कफ है. आपके शरीर में बहुत जल्दी हीट कम हो जाता है या हीट बनता नहीं है. सो व्हाट यू विल सी एनीथिंग चेस्ट एंड अबव इश्यूज विल बी मोर. आपको छाती और उससे ऊपर का प्रॉब्लम ज्यादा होगा. नाउ इफ यू इंक्रीज अ लिटिल हीट, उस जगह को थोड़ा गर्म भी कर लेना तो फ्रोजन पना चला जाता है. इट बिकम्स मोर फ्लेक्सिबल. If you warm anything, if you heat anything which is cold, it becomes warm and becomes more flexible. It expands. वो बढ़ता है, फैलता है. So you do what you do. You do a little experiment. थोड़ा सा experiment करो. सांस को रोकिए अपनी कैपेसिटी से और रोकते जाइए 10 मिनट तक. Many people will start sweating without doing exercise. शरीर में गर्मी फील होने लग जाएगी, पसीना आने लग जाएगा. आपने तो कोई एक्सरसाइज नहीं किया. But you increase the internal heat and then see the joints. और उसके बाद अपने जॉइंट को देखिए आप, वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होंगे. So if you do it right, अगर आपने प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए, because there is a customization required. हर एक चीज के लिए कस्टमाइजेशन.
है ना, हम थेरेपी कर रहे हैं। देखो हम योगा नहीं कर रहे, किसी ने पूछा योगा और इसमें क्या फर्क है जी, ये बिल्कुल 180 डिग्री ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक नॉर्थ है एक साउथ। कुंभक को साउथ मान लीजिए तो योगा नॉर्थ है। योगा का एंड रिजल्ट क्या है? मोक्ष, मुक्ति, एनलाइटनमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन, निर्वाण, कैवल्य, समाधि, ये सब योगा का एंड रिजल्ट है। फैक्ट्री में प्रोडक्ट क्या बनता है, वो एंड रिजल्ट हुआ ना। तो योगा करेंगे क्या मिलेगा? मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, समाधि मिलेगी, एनलाइटनमेंट मिलेगा। सो आपको वो हम नहीं देना चाहते, इवन इफ यू वांट। अगर चाहिए भी तो नहीं देना चाहते, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड यू डोंट वांट दैट। आप योगा भी कर रहे हैं तो अपने लोअर बैक पेन को ठीक करने के लिए कर रहे हैं, अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए कर रहे हैं। योगा इज नॉट डिजाइंड फॉर दैट। फंडामेंटली योगा इज डिजाइंड फॉर मुक्ति, मोक्ष। यस, मूविंग द बॉडी हेल्प्स। आप शरीर को किसी भी तरीके से हिलाएं, मदद करें। तो स्विमिंग भी आपकी बीमारी निकाल सकता है, वॉकिंग भी निकाल सकता है, एक्सरसाइज भी निकाल सकता है, एरोबिक्स भी निकाल सकता है। ना कुंभक इज व्हाट यू डू ऑन अ रेगुलर बेसिस। कुंभक आप कर ही रहा, कुंभक के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। नाउ दिस इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डायनामिज्म व्हिच इज देयर इन योर, यू आर यूजिंग इट, एवरीबडी कैन यूज इट, द होल यूनिवर्स इज यूजिंग इट। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डायनामिज्म को योग भी इस्तेमाल करता है फ्री होने के लिए, हम इस्तेमाल करते हैं स्टैब्लिश करने के लिए, संसार में आने के लिए, और अच्छे से अपने आप को स्थापित करने के लिए। तो इट इज ऑपोजिट, कंप्लीटली ऑपोजिट। तो योगा यूजेस लॉट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ फॉर मुक्ति। ठीक है ना, जो मेन प्रिंसिपल्स हैं इस जीवन के, उसको इस्तेमाल करता है योगा भी टुवर्ड्स मुक्ति। वी आर यूजिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कुंभक फॉर स्टैब्लिशिंग इनटू दिस बॉडी। आपके ऑर्गन को मजबूत कर रहे हैं, आपके जेनेटिक्स को चेंज कर रहे हैं इससे। सो इट इज कंप्लीटली ऑपोजिट। नाउ व्हेन यू डू कुंभक, डिजाइन्ड फॉर यू, because we find out what is the problem in you, you'll see you'll be able to handle your problem much faster, and you'll be able to achieve your health goal much faster. तो फ्रोजन शोल्डर जब भी आप बात करते हैं इस तरीके, तो अंडरस्टैंड योर मेटाबॉलिक हीट इज लेस इन योर बॉडी। आपकी गार्हपत्य अग्नि भी कम है। अगर आप देखेंगे अपने आप को तो आपका डाइजेशन फैक्टर भी वीक है। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। So if you think you have neuro musculoskeletal problem, so it is, the origin is neuro musculoskeletal. No, not at all. Mostly it is from your stomach. It starts from the metabolic factor. आपके शरीर में आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, उससे आपको प्रॉब्लम है। तो मेटाबॉलिज्म को ठीक करेंगे, गार्हपत्य अग्नि बढ़ाएंगे, जठर अग्नि बढ़ा देंगे, you'll see your frozen things will be resolved very easily. बहुत आसानी से निकल जाए। Okay, Vitika ma'am writes about excuse me, thyroid issue since 16 years, but I have carpal tunnel as well as many other neuromusculoskeletal issues like disc bulge in spine. So I want clarity if I should do Kumbhak therapy for thyroid or for this separately, or doing for thyroid will itself resolve these issues. See, if you have too much of a problem due to thyroid, too much, that means you are not able to move your body. आप अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहे हैं, then you do the thyroid program first. But if you can move your body a little, you will see this program will help in your neuromusculoskeletal issues, and then it will also help in your thyroid. है ना? तो अगर आप शरीर से बिल्कुल काम नहीं कर पा रहे, then go towards that. If you are able to make your body move, do your functions, then you can join this program. Okay, Shikha Das talks about severe pain on both knee and pain from hip, joint to toe. I'm 74 years old. Usually what happens if you move above 50, 50 साल से ऊपर जब भी आप जाते हैं ना, आपका पृथ्वी पक्ष कमजोर होने लग जाता है. Now it is time to slowly recede towards other life. So you get into something called as वात दोष. ठीक है ना, वात दोष में आ जाते हैं आप. So it is like 21 plus 21 years is tough, then 21 years is
पित्त, देन यू गेट इनटू वात। इस तरीके से जाते हैं, और अ लिटिल हियर एंड देयर, थोड़ा इधर उधर होता है, बट यूजुअली इट इज आफ्टर 50 to 55 you move to a vata paksha. That means you have to take care of the lower part of your body. आपको अपने नीचे वाले शरीर को संभालना पड़ेगा, क्योंकि अब ये जमीन के साथ में चिपक नहीं रहा. इट इज नॉट स्टेबल ऑन द ग्राउंड. सो आइडियली यू शुड स्टार्ट स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड, है ना. जमीन से ज्यादा रिश्ता बनाइए अपना. आपका जो जमीन के साथ में रिश्ता है ना, वो अब छूट रहा है. सो व्हाट हैपेंस, हिप एंड बिलो, हिप और उसके नीचे. नाउ फॉर लेडीज ऑल्सो आफ्टर 52 और सो दे गेट इनटू मेनोपॉज. उनको मेनोपॉज हो जाता है. मेनोपॉज का मतलब क्या, अब धीरे धीरे अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दो. लिव अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ अहेड, ओल्ड लाइफ, ओल्ड एज लाइफ, एंड फिर सबसे नाता तोड़ के अब थोड़ा रेस्ट कर. नाउ यू वांट टू लिव फॉर एवर, विच इज नॉट अ राइट थिंग. ये पाश्चात्य सोचना आपके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो गई है. ये वेस्टर्न थॉट प्रोसेस, वेस्टर्न एजुकेशन, ये सब ना, यू लूज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ. आपको जीवन का संबंध ही छूट जाएगा आपसे. ये वेस्टर्न एजुकेशन ये काम कर देगा आपके साथ. नाउ यू आर इवन आस्किंग व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट. क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए. देखो ये वेस्टर्न एजुकेशन कहां लेके आ गई आपके पास. आपको कैसे हेल्थ मेंटेन करें, आपको कुछ कॉन्टेक्स्ट ही मालूम नहीं. आप भूल चुके हैं कॉन्टेक्स्ट. तो इससे भी निकलना पड़ेगा, क्योंकि 80% बीमारियों को इलाज नहीं है, मगर जाते आप वहीं हैं. और कोई आपको कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, कहेंगे ऑपरेशन कर देते हैं, मगर ऑपरेशन से इलाज हो जाएगा, नहीं होता. फिर भी आप वहीं जाएंगे. तो घुटनों में दर्द है. घुटनों में दर्द कुछ चीज ऐसी है जिसके कारण घुटनों में दर्द आपको होगा ही होगा. पहली चीज क्या है, जरा मैं इसको खोल के बता रहा हूं. बहुत लोगों को घुटने की ही प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा खोल के बता रहा हूं, इसको समझिए. सपोज कीजिए आपका शरीर एक सुदृढ़ होता है ना, एक इंटीग्रेटेड होता है. अब जब चाहे हाथ को जैसे हिलाएं, हाथ को वैसे हिलाएं. एक काम कीजिए, जरा थोड़ा दारू पी लीजिए, ड्रिंक अ लिटिल अल्कोहल, थोड़ा अल्कोहल पी लो आराम से, 2-3 पैग लगा लो अच्छे से, और ज्यादा हो तो ज्यादा लगा लो. फिर देखो आपका कंट्रोल आपके लिम्स पे कहां जाएगा. आपका कंट्रोल नहीं होता, फिर आपके बोलने पे भी कंट्रोल नहीं होता. तो कंट्रोल ज्यादा अच्छा है या आउट ऑफ कंट्रोल ज्यादा अच्छा है. पहला सवाल ये. नहीं जी, कंट्रोल में तो हम सहन ही नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं तो सहन हो जाता. अच्छा जी, तो उसके लिए क्या करते हो आप. तो रोज सुबह उठ के चाय पीते हो, कॉफी पीते हो, है ना. जब थोड़ा सा ऐसा लगे कि कंट्रोल में चीजें आ गई है, अब ज्यादा टाइट हो रहा है, तो ढीला कर दो. एक सोटा मार लिया जी, एक गुटखा खा लिया जी, है ना. कभी कभी गप्पे मारना भी एक तरीके से एक नार्कोटिक का काम करता है, स्ट्रेस बस्टर का काम करता है. तो मगर गप्पे मारने से नुकसान नहीं होगा आपके शरीर पे, मगर चाय पियोगे, कॉफी पियोगे, और इस तरीके की चीजें अगर आदत बन गई तो छोड़ नहीं सकते. तो ये क्या कर रहा है, आपके जॉइंट्स को हमेशा ढीला कर रहा है. कंट्रोल कैसे खोएगा, सबसे पहले कंट्रोल कहां खोएगा, आपके जॉइंट्स. तो अगर आप ये चीज अपने लाइफस्टाइल में लेके आ जाते हैं, तो ऑब्वियसली आपको जोड़ों का दर्द आने ही वाला है, केवल वेट कर रहा है. तो क्या इसके अपोजिट कोई काम कर रहे हैं. चलिए आपकी इच्छा है कि नहीं जी, ये तो मेरा शौक है, ये तो मेरा शाही खजाना है कि मुझे तो ये करना ही है. तो ठीक है, एक काम कीजिए, इसके अपोजिट में, इसको सहन करने के लिए आप कुछ कर रहे हैं. तो आप तो अपनी शक्ति वापस नहीं लेके आ रहे हैं. इसके अपोजिट भाई कोई चीज की जाती है जिससे नुकसान है, तो उसके नुकसान से बचने के लिए भी कुछ किया जाता है. आपने दवाइयां ली, दवाइयां लेते हैं बचपन से. आप नहीं लेंगे, सरकार आपको जबरदस्ती दे देगी, आपका डॉक्टर डरा देगा, आपका फैमिली डरा देंगे, जबरदस्ती करेंगे. WHO कर देगा, नहीं तो अमेरिका तो सप्ताह चौधरी बैठा ही हुआ है, वही बता रहे कि आपकी लाइफ में क्या सही है क्या गलत है, आपको तो मालूम ही नहीं. तो आप दवाई ले रहे हैं बचपन से, यू आर अ ड्रग एडिक्ट. फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बॉडी में किस तरीके से होती है, एक और पक्ष बता रहा हूं. आप एक काम कीजिए, एक पेड़ से एक टहनी तोड़ लीजिए
और उसको देखिए कितना फ्लेक्सिबल है। उसको 1 महीना धूप में रखिए, उसके बाद देखिए कितना फ्लेक्सिबल है। क्या प्रॉब्लम क्या होगी? पानी सूख गया तो आपके वातावरण में पानी तो है ही नहीं, ना आपके जमीन के नीचे पानी है, ना आपकी नदियों नालों में पानी है, कहीं पानी तो आपने खत्म कर दिया। पानी तो आपने खत्म कर दिया। और एसी चला रहे हैं, एसी से पूरा वातावरण एकदम से ड्राई हो जाता है। जो ड्राई होगा तो आपके जोड़ों पे असर होगा ना, जब मूव करेंगे तो। भाई जो लकड़ी सूखी हुई है, जरा सा हिलाओगे टूट जाएगी, तो डैमेज ज्यादा होता है। ऐसे में आपके शरीर में पानी नहीं है तो आपके शरीर में डैमेज ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा लोड घुटनों पे पड़ता है, एंकल्स पे पड़ता है। तो एक बात बताइए, जब भी आप दवाई खाते हैं, क्या मालूम है आपको आपके शरीर का पानी सूखता है? नहीं तो एंटीबायोटिक कई दिनों तक ना खाएं, और सडनली कोई एक एंटीबायोटिक का कोर्स कर लीजिए, 3 दिन 4 दिन खा लीजिए, देखिए आपका मुंह सूखने लगेगा, आपका शरीर सूखने लगेगा। हार्ट डिजीज की दवाइयां जो है वो सारा पानी आपके शरीर से निकाल देती हैं, इससे हार्ट अटैक होता है। आप दवाई खा के हार्ट अटैक क्रिएट कर रहे हैं, अपने शरीर का पानी निकाल रहे हैं। तो आपके जोड़ों पे दर्द नहीं आएगा क्या? आपके शरीर के अंदर पानी निकल जाए तो एसिड एनवायरनमेंट बढ़ जाएगा ना, एसिडिक एनवायरनमेंट बढ़ जाएगा आपके शरीर का। कैंसर नहीं होगा क्या आपको? यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा क्या आपका? कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा? सूखना ही तो कॉन्स्टिपेशन है, आपके शरीर का पानी सूख गया, कॉन्स्टिपेशन हो जाए। तो इन्फ्लेमेशन नहीं होगा क्या आपके शरीर में, जिसे जलन कहते हैं, जिसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इन्फ्लेमेशन से दर्द होता है। हड्डियां जो अगर टूट भी जाए तो उससे दर्द नहीं होता, बढ़ जाए उससे दर्द नहीं होता, टेढ़ी मेढ़ी हो जाए उससे दर्द नहीं होता। दर्द कैसे होता है? इन्फ्लेमेशन से। तो एक बात बताइए, पानी आप खत्म कर रहे हैं अपने शरीर का। दो चीजें बता दें, है ना, 2 चीजें बता दी। तीसरी चीज मेटाबॉलिज्म वीक है, जो पहले बताया था। आपका लिवर, जब भी आप दवाई खाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड खाते हैं, आपके लिवर को नुकसान होता है। तो आपके लिवर को नुकसान होगा तो वो तो चीजें बना नहीं पाएगा आपके शरीर को दोबारा से रीजनरेट करने के लिए। जॉइंट्स को रीजनरेशन जो होगा वहां पे, वो बना ही नहीं पाएगा। तो आप घुटने का दर्द, तो नार्कोटिक्स, यूज ऑफ ड्रग्स बता दिया पहला, इवन चाय कॉफी और व्हाटएवर। उससे दूसरा परिणाम क्या निकला है? डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी बाय मेडिसिन, बाय फूड। इफ यू ईट जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, योर लिवर विल गेट इंपैक्टेड, मेटाबोलाइट ठीक से नहीं बनेंगे, आपका रीजनरेशन नहीं होगा। थर्ड थिंग इज मेटाबॉलिज्म लेके आए। फोर्थ थिंग इज फ्री फ्लो ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। आपके जीवन में चीजों का फ्री फ्लो होना। वो कहां से शुरुआत होती है? वेयर इट स्टार्ट फ्रॉम? इट स्टार्ट फ्रॉम एनवायरमेंट। तो आप डीजल की गाड़ी है, धुआं निकाल रही है, आप उसके पास में जाइए, आप सांस रोक लेंगे, है ना, सांस ठीक से आएगी नहीं। अब मुझे बताइए, पिछले 50 सालों में हमने तो अपना एनवायरमेंट ही बदल दिया। क्या सभी के लिए, क्या सबको सांस आ रही है ठीक से? शायद आपको केवल लग रहा है। अगर पोल्यूटेड एनवायरमेंट है तो आपका शरीर सांस नहीं ले रहा ठीक से। वहां से शुरू होता है फ्री फ्लो का रुकना। इसे नाग वायु कहते हैं। क्या कहते हैं? नाग वायु। तो आपका फूड का फ्लो ठीक नहीं हो रहा, प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम, एसिड रिफ्लक्स, अंदर जाके इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, लिवर आपने खराब कर ही दिया, डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा, यूरिन फ्लो ठीक से नहीं हो रहा। बहुत लोगों को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यूरिन ब्लॉक होने की समस्या है। देखो किडनी खराब हो रही है बहुत लोगों की, फ्री फ्लो नहीं हो रहा आपके शरीर में। स्टूल का, मल का, यानी कि डिटॉक्स होना, वो फ्री फ्लो नहीं हो रहा शरीर के अंदर। और इसके मानसिक कारण भी है। देयर इज अ साइकोलॉजिकल रीजन ऑल्सो अराउंड इट। तो साइकोलॉजिकल रीजन को आप ठीक नहीं करेंगे तो फिजिकल रीजन जाएगा नहीं। आप दवाई खा के मैनेज कर लोगे, थोड़ा लगेगा आपको आराम, मगर आप और नुकसान कर। तो ये कैसे ठीक करेंगे? आप जब कुंभक करते हैं तो सबसे पहली चीज जो 100% निकल जाती है वो आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज है। आपका डर का फैक्टर दुनिया में, जो भी जिस भी चीज से आपका डर का फैक्टर है, आपके शरीर में कम हो जाता है। आपकी झेलने की क्षमता बढ़ जाती है, आपका इम्यूनिटी फैक्टर इंप्रूव हो जाता है, आपका बॉडी का इंटीग्रेशन एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स वो इंप्रूव हो जाता है। क्लिनजिंग यानी डिटॉक्स प्रोसेस इंप्रूव हो जाता है, नाग वायु दोष ठीक हो जाता है।
तो आपको कम से कम वो घुटने रिप्लेस करने वाली तक जरूरत नहीं पड़ेगी. यू विल बी एबल टू मूव, यू विल एबल टू फील अ लिटिल बिट स्ट्रांग. मगर क्योंकि आपने बहुत सालों तक बहुत नुकसान किया. Swami ji, please unmute yourself. अगर आप 50-60 साल ऐसा कुछ अगर 50-60 साल तक आपने नुकसान किया, 70 साल तक, तो कुछ टाइम दीजिए इस शरीर को, आपको बहुत फायदा होगा. आपकी लाइफ, आपका लाइफ को देखने का नजरिया बदल जाएगा. तो प्लीज गिव अ लिटिल अपॉर्चुनिटी फॉर योर बॉडी ऑल्सो. अपने शरीर को भी एक थोड़ा सा मौका दें और उसको स्ट्रांग करें. इंटरनल फैक्टर्स को स्ट्रांग करें, इंटरनल फोर्सेस को स्ट्रांग करें, और आपकी जिंदगी बहुत सुंदर हो जाए. Okay, anybody from the participants who have raised their hand? Preeti ma'am, you can ask your question. Namrata Chatterjee ma'am, if you want to ask your question, you can ask your question. Yes, good evening. गुड इवनिंग जी. यस, गो अहेड. आप जो पहले बता रहे थे कि डायग्नोसिस पहले जो होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट, योर फर्स्ट पॉइंट इज करेक्ट डायग्नोसिस. ओके. Yes. तो ये तो हम लोग फिजिकली आप लोगों के सामने नहीं रह पाएंगे, तो थ्रू फोटोग्राफ हाउ कैन इट बी पॉसिबल? Do you think any diagnosis is perfect at this point of time? Allopathic diagnosis? You have an idea that allopathic diagnoses are perfect, but no, none of the allopathic diagnoses are perfect. So, Okay. एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि डायग्नोसिस जो है वो फिजिकल डायग्नोसिस से ज्यादा बेटर आप अपने आप को डायग्नोस कर सकते हैं. So quantitative analysis of the physical parameters, or the moment you analyze anything quantitatively, if you analyze matter quantitatively, you will see that it changes every moment. For example, if you test your TSH is 12.5 at 7 o'clock in the morning, do you think your TSH will be same at 8 o'clock? These Maybe not. parameters are variable. These Yeah. parameters are variable. And the variable, you take your blood sugar test from right hand and left hand. Both of them will show a different number. You take it right hand, right leg, left leg. All the four different. ये चारों अलग अलग होंगे. तो आप कौन सा स्टैंडर्ड मान रहे हो और क्यों मान रहे हो? नहीं, जैसे आप अभी बोल रहे थे कि आप लोगों का फर्स्ट पॉइंट जो है, मैं आ रहा हूं उस पे, मैं आ रहा हूं उसी पे आ रहा हूं. Yes. तो पहले आई एम ट्राइंग टू ब्रेक योर आइडिया ऑफ व्हाट इज परफेक्ट डायग्नोसिस, है ना. पहले इसको हटा, कीप योरसेल्फ अ लिटिल ओपन. नाउ यू आर फीलिंग पेन, टेल मी व्हिच डायग्नोसिस विल टेल दैट यू आर इन दिस मच ऑफ पेन. Is there a diagnosis for pain? Is there a diagnosis for discomfort? When you say, there are many issues like infertility, and many people have undiagnosed infertility, but they have infertility. Which diagnosis will tell that I love this person more than this person? So when you think about life in terms of qualitative or in terms of qualitative apparatus or qualitative manner, अगर qualitative manner में अगर आप अपने आप को देखेंगे ना, तो आप ज्यादा अच्छा निदान और डायग्नोसिस कर पाएंगे, which no allopathic diagnosis can do. So they only do quantitative measurements, which is variable. एक वेरिएबल चीज को, नदी का पानी लेके आप कहते हैं ये नदी का पानी है, मगर वो पानी तो कब का वैसा आगे निकल चुका होगा. In 24 hours, the nadi is completely washed out. So next क्या आ रहा होगा उसके बारे में आप नहीं बता सकते. So quantitative analysis is the biggest farce.
जिसकी वजह से एलोपैथिक डॉक्टर्स को नहीं समझ में आ रहा व्हाई वी आर नॉट एबल टू हैंडल 80% ऑफ डिजीज, बिकॉज फंडामेंटली दे आर रॉन्ग. तो दूसरी बात, अब सेकंड पार्ट आते हैं. व्हाट वी आर डूइंग इज, वी सपोज आप सांस नहीं आ रही आपको, यू आर नॉट एबल टू टेक ब्रेथ एंड यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल फील कर. नाउ इसका कोई डायग्नोसिस नहीं होता कि व्हाई यू आर नॉट एबल टू इनहेल प्रॉपर्ली. डायग्नोसिस किस चीज का होगा? इफ देर इज ब्लॉकेजेस इन योर lungs or not. So if there is no blockages in your lungs, you have some fear because of which, कोई डर की वजह से आपकी सांस नहीं आ रही है, तो इसका कोई डायग्नोसिस नहीं होता. तो वो डर किस वजह से आ रहा है? वो डर किस वजह से आ रहा है कि आपके अंदर, दिस इज समथिंग दैट यू कैन एक्चुअली do an experiment for yourself and see, and we have lot of testimonials about that. लोग जो जिनको की they were fearful, जिनको डर लगता था, उनको palpitation जल्दी हो जाता था, कोल्ड स्वेट जल्दी आ जाता था, एंजाइटी बहुत जल्दी हो जाती थी. एंजाइटी का कोई टेस्ट नहीं है, एंजाइटी जल्दी आ जाती थी. दे डू कुंभक फॉर फ्यू मंथ्स एंड देयर एंजाइटी गोज ऑफ, देयर फियर गोज ऑफ, उनका डर खत्म हो जाता. दे से उनकी नींद नहीं आती थी, वो नींद आने लग गई, बिकॉज यू आर नॉट, योर ब्रेथ इज नॉट स्मूथ. यू विल सी, यू विल गेट इनटू इंसोम्निया सिचुएशन. डर की वजह से इंसोम्निया होता है और उसके लिए डर का कोई इलाज नहीं है, मगर आपको बेहोश किया जाता है रोज ताकि आप सो सकें. तो उससे आपका डर बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा. तो जो गोलियां आप खा रहे हैं ना, उससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, कम नहीं होती. So, but if you take care of that fear factor, and why you are fearful, because your body is not robust. एक मजबूत शरीर को डर कम होता और उससे जुड़ा हुआ एक मजबूत मन. तो what we are diagnosing, हम क्या डायग्नोस कर रहे हैं? हम ये डायग्नोस कर रहे हैं, पहली चीज ये, सपोज we make you do some experiment with your breath. सांस आपकी कितनी ले पाते हैं, तो we test the स्ट्रेंथ फैक्टर्स ऑफ योर बॉडी थ्रू इट. इससे आपके बॉडी का स्ट्रेंथ फैक्टर्स टेस्ट करते हैं. इससे आपका पता, हमको पता चलता है कि आपका हार्ट का फंक्शन कितना होगा. बिकॉज ऑफ दैट वी ऑल्सो गिव यू, मेक यू डू अ लिटिल एक्सपेरिमेंट, जो आपके बॉडी के साथ में कितना मूव कर पा रहे हैं, कितना उठा पा रहे हैं, कितना बेंड कर पा रहे हैं. वी आर जस्ट टेस्टिंग द फोर्स फैक्टर्स, द स्ट्रेंथ, द फंडामेंटल स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी, थ्रू विच you can actually recover yourself, or if it is weak, you get into a disease. So we are just trying to see what factors have become weak in you, because of which you have got into a particular disease or multiple disease. And you do this experiment. Also, you actually post a photograph so that we can see what state of mind you are in. If you are doing an experiment, will you be able to do the right experiment, say us the right thing, share the right thing? That also we do as a second line of जैसे कहते हैं ना कि हम ये ध्यान रखते हैं कि अगर ये बंदा इस स्थिति में आ गया where he can't do things, we don't trust those experiments, rather we do it in a completely different manner, which is just by looking at you, just by looking at a person or looking at a child, you can say what state the child is in. What does the child want? So it's another kind of a diagnosis, because it has an esoteric element involved in it. We don't say it, हम इसको बताते नहीं हैं. But there are practical experiments which says a lot about you, और आपके अंदर कौन से factors weak हैं उसके बारे में बताते हैं. तो वो हम diagnosis कर रहे हैं. That is why we say this is not an allopathic diagnosis. This is a completely different kind of a diagnosis. We are actually coming up with lot of diagnoses like those diagnoses, which by using technology will come up with those kind of diagnosis later on, because it needs a lot of experimentation. There is a technology involvement also, but it will not be a quantitative one. It will always be a qualitative one. Through qualitative analysis, we go deeper in the subtle aspects of life. Through quantitative, we can't do that.
Through photograph, can you diagnose the actual state of that particular person? Yes. Through photograph, it can be easily diagnosed. There are a lot of people who can say everything about you just by looking at you. Chodo, but we don't want to go there. We make you do a little experiments and we take it as a criteria. अच्छा, एक और बात आपसे बोली थी, आप जैसे बोल रहे थे कि पृथ्वी से यानी कि जमीन से जुड़ना है, अभी जमीन से हट चुके हैं, ये कैसा, मतलब थोड़ा ये बात समझ में नहीं आई, थोड़ा उसको समझाइए। देखिए, अगर आप, हाँ, जमीन से जुड़ने की बात, वैसे भी अभी हमने जमीन के साथ में एलर्जी हो गया ना, हाँ, चप्पल पहनते हैं हम, जमीन पे पांव भी नहीं रखना चाहते हैं। एक एक्सपेरिमेंट करके आप लोग देखिए, ठीक है? अखाड़ा होता है ना, वे देयर इज लॉट ऑफ लूज मड, मिट्टी बहुत लूज है जहां पे, इफ यू कैन जस्ट पुट योर फीट इन द लूज मड फॉर say approximately, or stay with that mud for approximately 3 times of a mandala, that means 48 minutes into 3. अगर आप इतने समय के लिए अगर मिट्टी में भी रुकेंगे ना, तो you'll see your leg pain, knee pain, hip pain, slowly you'll feel strength in these areas and this will recede, this will come down, वो कम हो जाएगा. Also you'll see the bowel movement will start happening more. So basically what I am saying is, this is the real science of life. Cutting something and seeing it is one way of looking at things, but by your own experience you can see कि जितना आप जमीन के साथ में जुड़ने लग जाते हैं ना, वो लोअर बॉडी में आपको स्ट्रेंथ ज्यादा महसूस होने लगता है. Most of your issues will reside, come down the moment you connect with earth. But because we are not connecting with it, why it is happening? There are a lot of things. If I start explaining you, it might take hours and hours. तो अभी इतने समय में तो आपको हम समझा नहीं सकते, सिखा नहीं सकते ना कुछ. बट ये एक्सपेरिमेंट आप करके देखो. जी, यानी आप बोलना चाह रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा जहां तक हो सके नंगे पांव चलना चाहिए जमीन में. नंगे पांव चलना चाहिए, जमीन पे आपके पांव होने चाहिए, जमीन के साथ में आप जमीन पे बैठना चाहिए. जी, जमीन पे आपको बैठना चाहिए. और एक चीज, जमीन के साथ में जुड़ना और भी चीजें होती हैं. द मोर यू यूज योर माइंड, जितना आप लॉजिक इस्तेमाल करेंगे ना, उतने आपके पांव कमजोर हो जाएंगे. द मोर यू यूज योर माइंड, द लेस यू इन्वॉल्व विथ लाइफ. जितना आप दिमाग इस्तेमाल, देखिए, आप पूरा गूगल दिमाग में भर लीजिए, आप खुश नहीं हो पाएंगे. लेकिन थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लो तो आपकी अंदर खुशी आ जाती है. तो बट पीपल आर नॉट एबल टू बिकम हैप्पी. दैट इज ऑल्सो यू आर डिस्कनेक्टिंग विथ अर्थ. तो आप सेलिब्रेट करना भी शुरू करें ना, दैट इज ऑल्सो कनेक्टिंग विथ अर्थ. तो लॉजिक पे बहुत ज्यादा अगर आप जोर डालेंगे, आपकी लाइफ खराब हो जाएगी. वही हम कर रहे हैं. यू आर टू मच यूजिंग योर लॉजिक, लीनियर माइंड. यू आर नॉट यूजिंग योर पैरेलल माइंड. If you use your parallel mind a little, you will connect with earth. Parallel mind is Shakti. Parallel mind is Prithvi. Parallel mind is feminine. Parallel mind is celebration. वही चीज जो है वो अगर पृथ्वी हम कह रहे हैं तो it has lot of connotation. मगर सिंपल टर्म्स में भी कहें तो आप मिट्टी के साथ जुड़िए. जी, समझ में आ रहा है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. Sumit sir, you can ask your question, please. Principles of quantum physics, will it work? Milton sir. Principles of quantum physics is what I am talking about. I am talking about the principles of quantum physics. And nowadays, related with the yes. So there is something called as quantum entanglement, which is the fundamentals through which life works. The fundamentals of quantum physics in terms of how one relates to another is called as quantum entanglement. This quantum entanglement also results to gravitation. This quantum entanglement also
results to something called as dharma. Dharma means how things hold up. Things hold up through quantum entanglement. And this is called as dharma. This quantum entanglement, when it multiplies, that is called as earth. Earth is the multiplicative or additional factor. Right? Earth is additional factor. When these two happens, whatever you want, if it happens in that way, your desires get fulfilled. This is called as kama. And this quantum entanglement, when it becomes fulfilled, it is called as moksha. In terms of disease, most of the disease is a wrong kind of a quantum entanglement. So if you attach yourself somewhere else into a book or any idea, you are not with the reality, or you are not attached with the earth. Earth is the right kind of quantum entanglement which creates health. And I can talk about it for hours and hours. But see, it will not help. Do Kumbhak. Kumbhak will create the right kind of quantum entanglement or health. It can also make you come out of quantum entanglement. I have some varicose vein. Pranam sir, Sumit Agarwal. Can we please ask questions one at a time? Sumit sir, you can ask your question. Yes. Pranam sir. Pranam. सर मेरा प्रॉब्लम है कि मैं लास्ट 3 ईयर से जो है ब्रेन ट्यूमर से सफर कर रहा हूँ, और ट्यूमर का जो साइज है वो भी जस्ट मैंने लास्ट MRI कराया था तो उसमें 7 सेंटीमीटर का आया था। ट्यूमर का साइज बढ़ रहा है बोल रहे? हाँ बढ़ रहा है, क्योंकि फर्स्ट जब मेरे को डायग्नोस हुआ था ट्यूमर तो उस समय 4.5 सेंटीमीटर ट्यूमर का साइज था, जो कि अब 3 इयर्स में बढ़ के 7 सेंटीमीटर हो गया है। तो देखिए आपको मैं कुछ बताता हूँ। हाँ, आपको कुछ मैं बताता हूँ। पहली बात तो हम कैंसर, या ये कैंसरस है कि नहीं है पहले ये बताइए। ये नॉन कैंसरस है सर। नॉन कैंसर इसके लिए सर हाँ मैंने जो है नेचुरोपैथ से भी इसका ट्रीटमेंट लिया, लेकिन नेचुरोपैथ से मुझे कोई खास कोई बेनिफिट नहीं हुआ सर। पहली बात मैं आपको और स्वामी जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। एक और चीज बताऊं, अगर आप इंटरवेंशन करेंगे ना इसको टेस्ट करने के लिए भी, तो भी नॉन कैंसरस हो सकता है। देयर इज चांस। आपको मैं पहले बता देता हूं कैसे कैंसर का मतलब क्या होता है और ये क्या है। अगर ये नॉन कैंसरस है, अभी तक नॉन कैंसरस है, तो इसको कैंसरस नहीं होने देना है, ठीक है ना। और दूसरी चीज बहुत सिंपल टर्म्स में देखिए, आप हमारा कैंसर का एक प्रोग्राम होता है, वो कैंसरस ट्यूमर्स के लिए और नॉन कैंसरस ट्यूमर्स के लिए भी है। बट एक और चीज बता देता हूं, ये प्रोग्राम भी जो है ना, इसके अंदर भी ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसी चीजें हैं जिससे कि आप उसको रोक सकते हैं कैंसरस होने से। पहली बात तो कैंसरस क्यों होता है, ट्यूमर क्यों होता है, पहली बात ट्यूमर बता देते हैं, उसके बाद ये कैंसरस कैसे होता है वो थोड़ा सा बताएंगे। देखिए ज्यादा टाइम नहीं है। तो आपके बॉडी में हर चीज फ्लो होती है, जैसे मैंने बताया नाग फैक्टर, हर चीज फ्लो होती है। तो ये फ्लो में कहीं रुकावट आती है ना, तो वहां पे एक गोला बन जाता है। जैसे हवा फ्लो हो रही है, वहां पर रोक दिया आपने उसको, तो वो ये वापस आ जाएगा ना, रिवर्स आ जाएगा और फिर आगे फ्लो होना चाहिए, गोला बन जाएगा। ये गोला जो है, जो बन जाता है, ये अगर काफी समय तक रहता है बॉडी के किसी पार्ट में, तो वहां पर टिश्यू डिपोजिशन होने लग जाता है और ये ट्यूमर बन जाता है। ट्यूमर बनने के बाद में अगर आपका रेप्लिकेटिव मैकेनिज्म, एक टिश्यू का 2 टिश्यू होना, ये मैकेनिज्म जिसे हम ज्ञानाग्नि कहते हैं, मतलब 3 अग्नि होती है, ज्ञानाग्नि, दर्शनाग्नि, कोष्ठाग्नि। आपका शरीर किसी चीज को देखता है, उसकी एक इंटेलिजेंस है, वो उसको दर्शनाग्नि होता है, वो एग्जैक्टली उसको मैप कर पा रहा है, और कोष्ठाग्नि होता है वो एग्जैक्टली उसको बना पा रहा है। तो आपके टिश्यू को अगर आपका बॉडी बनाता है तो वो हेल्दी टिश्यू होता है, अगर वो टिश्यू नहीं बना पाता तो खराब टिश्यू होता है, उसे कैंसर कहते हैं।
सिंपल टर्म्स में समझिए, अगर खराब टिश्यू बनता है तो उसे कैंसर। तो अगर ट्यूमर है, अगर हम फ्लो को ठीक कर दें तो वो ट्यूमर खत्म हो चाहे नहीं हो, आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर हम फ्लो को ठीक कर दें, यानी कि वो कैंसर बनने से रुक जाएगा। तो अभी यही स्टेट है, अभी तो ये स्टेट है। तो अष्टांग चिकित्सा में हर तरीके के फ्लो को ही हम इंप्रूव कर रहे हैं। तो आप अगर ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको काफी बेनिफिट होगा। लेकिन एक कॉशन के साथ में आपको मैं बता रहा हूं। कॉशन क्या है? कॉशन ये है कि एक डिजीज का एक मोमेंटम होता है, आपके शरीर में बीमारी होने का एक स्पीड होती है। अगर स्पीड को आप रिवर्स कर पाए तो वो चीज उतने समय में ठीक हो जाएगी। तो अगर कोई वो 1 महीने में कर पाता है तो 1 महीने में ठीक हो जाएगी, 1 साल में कर पाता है तो 1 साल में ठीक हो जाएगी, 3 साल में कर पाता है तो 3 साल में ठीक हो जाएगी। मगर उस तरफ कोशिश तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है? ये एक कदम तो आपको लेना ही पड़ेगा। अब कितने समय में ठीक होगा ये तो पक्का है, उसका अंडरलाइन कॉज जो उसको बढ़ा रहा है वो हम खत्म कर सकते हैं, ये तो पक्का है। मगर वो ट्यूमर को घटाना कोई जरूरी भी नहीं है। और इस वक्त में मैं कहूं, अगर वो परेशानी नहीं कर रहा कोई, तो उसको ऑपरेट करना भी जरूरी नहीं। तो थोड़ा मौका आप दे सकते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करो। Okay, the next सर participant can नहीं, ask एक मिनट उनको पूछने दीजिए, अनम्यूट करना। हाँ बोलिए। हाँ सर, अब आवाज आ रही सर मेरी? हाँ बोलिए। question. सर उसकी वजह से ट्यूमर का जो साइड इफेक्ट होता है कि फिट्स आते हैं, जैसे एपिलेप्सी टाइप का। और आजकल क्या हो रहा है कि दिन में 3 से 4 बार मेरे को एकदम, पहले तो क्या होता था, आज से लगभग 1 साल पहले ये होता था कि कभी भी एकदम फिट्स आया और मैं खड़े खड़े गिर जाता था, एकदम बेहोश सा हो जाता था। और फिर 1-2 मिनट के बाद मेरे को होश आ जाता था। अभी क्या हो रहा है पिछले लास्ट 6 महीने से कि जब भी इस तरह का कुछ होता है तो मेरे को ऐसे लगता है कि चक्कर आ रहा है मेरे को। और अच्छा, मैं जो है अपने आप को थोड़ा सा हाँ साइड मैं में बता कहीं देता हूँ बैठ जाता तो। हूँ, मतलब मैं गिरता हाँ, गिरता नहीं हूँ मैं बस। आप कुंभक करना, ये अष्टांग चिकित्सा करना शुरू करेंगे, आपका जो फ्रीक्वेंसी फिट्स का है ना वो कम हो जाएगा, पहली बात ये। तो सर और धीरे धीरे ये जा भी सकता है। और अगर हाँ बहुत वही कम तो हो सर, गया तो आपको कोई खास परेशानी नहीं होगी। ये मैंने एलोपैथिक जो डॉक्टर्स हैं वो तो डायरेक्ट की सर्जरी कराई है, सर्जरी के अलावा उनके पास कोई सर्जरी के और। बाद में कोई गारंटी नहीं है, देखो कि आपको फिट्स जी नहीं सर। आएंगे, कोई गारंटी नहीं है कि वो ठीक ही हो जाएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि आप बिल्कुल ही हेल्दी होंगे, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि आपको कोई ऑर्गन डैमेज नहीं होगा, कोई लिंग काम करना बंद नहीं करेगा। बहुत इश्यूज होते हैं मैं प्री सर सर्जरी के। सर्जरी में नहीं जाना चाहता, इसीलिए मेरे को एक डॉक्टर है नेचुरोपैथ डॉक्टर, तो उन्होंने नेचुरोपैथ थे, तो मैंने नेचुरोपैथ लिया। करीबन 2.5 साल तक मैंने नेचुरोपैथी किया और मैं केवल प्लांट फूड खाता था। कोई मैं रोटी चावल वगैरह सब बंद कर दिए थे मैंने, केवल प्लांट एकदम, वो भी रो फूड। देखिए तो नेचुरोपैथी जहां तक बात है, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। आयुर्वेद में बहुत काम हो रहा है इसके ऊपर, पर क्या है वो काम बाहर नहीं आ पाता। ये एलोपैथी का इतना मार्केटिंग है और इतना इतना ये फैलाव है कि ये किसी और चीज को बहुत अच्छे तरीके से ऊपर नहीं आने देते। जी जी सही कह रहे हैं सर। आयुर्वेद में रस शास्त्र है, रस वैद्य मिल जाएंगे आपको, जो कि रस चिकित्सा जो है इसके अंदर बहुत अच्छा काम कर सकता है। जो दूसरा आयुर्वेद के अंदर पंचकर्मा इसके अंदर बहुत अच्छा काम कर सकता है। अरे आयुर्वेद में कुछ ऐसी मेडिसिन है जो कि अर्बुद के लिए या फिर जैसे हम कहते हैं कि ये ट्यूमर्स के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। तो आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, आयुर्वेद की तरफ में जाना पड़ेगा। नेचुरोपैथी एक अच्छा तरीका है, लाइफस्टाइल, एज अ लाइफस्टाइल बहुत अच्छा तरीका है। मगर कमिंग आउट ऑफ अ डिजीज, नेचुरोपैथी के अलावा आपको कुछ और सपोर्ट लेना चाहिए। लेकिन कुंभक का सपोर्ट आपको जरूर लेना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने जब 2 से 2.5 साल में मैंने नेचुरोपैथी किया तो उससे मेरे को ट्यूमर वाले केस में आप कह सकते हैं बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन मेरी जो अदर जो रिपोर्ट्स हैं, बॉडी की जो ब्लड रिपोर्ट्स हैं, उसमें मेरे को काफी बेनिफिट हुआ। और मेरी हाँ, रिपोर्ट्स एकदम, जो डॉक्टर्स ने चेक किया तो वो मेरी रिपोर्ट्स जो है एक आम आदमी से काफी अच्छी आई रिपोर्ट। हाँ तो वो ठीक है, एज अ लाइफस्टाइल ठीक है, मगर आपको ये इससे अगर निकलना है तो कुछ और सपोर्ट भी लीजिए ना। तो सर
कोई ऐसा ट्रीटमेंट कि ये ट्यूमर जो है जैसे बना था अपने आप बॉडी में बना था, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बनी थी, मैं आपको बॉडी ही बताता अपने हूँ, आप डिजोल्व कर दे उसको, बॉडी डिजोल्व बॉडी कर दे ही उसको, तो डिसॉल्व मैं कर दे, ऐसा ऐसा होता है। कुंभक से बहुत सारे ट्यूमर्स डिसॉल्व हो जाते हैं, मगर कुछ बड़े हो जाते हैं ना। तो मुझे एक बात बताइए, अगर उससे प्रॉब्लम नहीं, बॉडी के अंदर तो ट्यूमर्स होते ही हैं सबके, बॉडी के अंदर, उससे मेरे को सबकी बॉडी के अंदर डायरेक्टली कैंसर के सेल होते हैं, लेकिन वो बढ़ते नहीं है ना। तो अगर वो बढ़े नहीं, अगर वो प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, तो ट्यूमर को हटाने की तरफ में जाना क्यों है, ये तो बताइए। ये तो है सर, मेरे जब तक ट्यूमर वो फर्स्ट टाइम जब डायग्नोस हुआ था तो 4.5 सेंटीमीटर का हुआ था, तो इसका मतलब कि बढ़ वो रहा है जब ना, तक वो बढ़ रहा है, इसीलिए उसको कम रोकने के लिए मैं कह रहा हूं और सपोर्ट लीजिए। केवल नेचुरोपैथी से नहीं काम चलेगा, और ट्यूमर को डिसॉल्व एलोपैथी कर नहीं सकता, ऑपरेशन के अलावा उसमें कुछ है नहीं, मगर आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें हैं जो ट्यूमर को डिसॉल्व कर सकती हैं। तो जैसे कुंभक इसमें, जैसे कुंभक मैंने आपको बहुत हेल्प आपकी करेगा, वीडियोस आपका वगैरह अंडरलाइन देखे, कॉज खत्म कर देगा, उसको बढ़ाने का जो कॉज है ना वो खत्म कर देगा, है ना। अभी मैं और रोज डिसॉल्व करने में भी ज्यादा मदद तो करेगा। नहीं, लेकिन सुबह मॉर्निंग में 10 मिनट कुंभक करता हूँ सर। कुंभक का सर टाइमिंग कुछ कितना क्या करना कुंभक कर रहे चाहिए? हैं आप, क्या कुंभक कर रहे हैं आप? वही ब्रीथ होल्डिंग की, और मेरा जो होल्डिंग का जो टाइमिंग है वो 30 to 40 सेकेंड है सर। देखिए, ब्रेथ होल्डिंग से आपका बढ़ भी सकता है ट्यूमर, क्या मालूम है आपको? नहीं सर, मेरे को नहीं मालूम। क्योंकि ये आपके टिश्यू ग्रोथ को बढ़ाता भी है। तो हम जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कस्टमाइज करना, ये हम क्यों बोल रहे हैं? तो कुंभक आप कहां से कर रहे हो पता नहीं, क्योंकि कुंभक तो और कहीं है ही नहीं, योग कलाचार के अलावा और कहीं कुंभक नहीं कराते। योग कलाचार में जो कुंभक कराते हैं वो हेल्थ की तरफ तो है नहीं, वो डिजीज की तरफ में है नहीं, वो थेरेपी नहीं है। सर तो कुंभक आप अगर मतलब जैसे एक बार में मैंने सांस लिया, फिर मैंने उसको कितनी देर होल्ड कर सकता हूँ, यही कुंभक होता है सर? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, ये कुंभक नहीं होता। यही तो प्रॉब्लम है कि आप लोग कुछ भी जो किताबों से कर रहे हैं ना, किताबों से पढ़ पढ़ के करवा रहे हैं। और योग कलाचार में कुंभक का मेंशन है, अगर आप गेरन संहिता या फिर ऐसी कुछ संहिताएं देखेंगे तो उसके अंदर कुंभक का मेंशन है, बट वो योग कलाचार के शास्त्र हैं। आपका सर कोई वीडियो है ऐसा यूट्यूब पे जो चिकित्सा कुंभक? चिकित्सा के लिए कुंभक का इस्तेमाल मुझे तो नहीं मालूम कि कोई कर रहा है। सर आपका कोई ऐसा वीडियो है यूट्यूब पे जो कुंभक की कैसे किया जाना चाहिए, एकदम राइट मेथड है? नहीं, ये हम नहीं करते इस तरीके से, क्योंकि ये वन साइज फिट ऑल नहीं, तो एलोपैथी बन जाएगा ना, दर्द के लिए एक दवाई खा लो सारे के सारे। कुंभक को लेके हम पूरा का पूरा एक नॉलेज बेस जरूर तैयार कर रहे हैं, मगर उसके लिए हमारे पास में अभी ना लोगों को ट्रीट करने से के अलावा टाइम कम मिलता। तो कुंभक को लेके कैसे काम कर सकता है ये, किस बीमारी में, ये हम बना रहे हैं, एक नॉलेज बेस क्रिएट कर रहे हैं। मगर उसके बावजूद भी कुंभक वैसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत पावरफुल चीज है। वो अगर आपकी प्रॉब्लम को हम नहीं पता कर पाए कि कहां पे और किस तरीके से मोल्ड करना है आपके कुंभक को, तब तक कुंभक नहीं किया जा सकता। इट इज नॉट वन साइज फिट ऑल। ये ऐसा नहीं है कि 5 प्राणायाम है जी कर लो, शायद सभी एक ही कर लो, एक पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये हम नहीं करते हैं। हमने ये जानबूझ के नहीं रखा। उस तरीके से अगर करेंगे तो बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे हम, पर नहीं बढ़ना चाहते हम तेजी से। वी वॉन्ट टू क्रिएट अ थेरेपी बेस। कुंभक बहुत बड़ा आयाम है। अगर मैं 10 जन्मों तक भी कुंभक को खोलता रहूं, सिखाता रहूं ना, तो भी वो पूरा नहीं पड़ेगा। इतना बड़ा ये यूनिवर्स है। इसका बहुत छोटा सा पक्ष अभी हम कर रहे हैं, तो इसीलिए आपको प्रोग्राम के बारे में बोल रहे हैं। और आपको बता दिया, आप दूसरी तरफ आयुर्वेद और रस वैद्य उसकी तरफ भी जाएं, उसमें बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट हैं। विल टेक वन लास्ट क्वेश्चन, एक और बस लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद टाइम नहीं है। Okay, Pooja ma'am, you can ask your question, please. Pooja Seth. Pitambar Chakravarti, you can ask your question. Please unmute yourself. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ, मैं पीताम्बर चक्रवर्ती बोल रहा हूँ कोलकाता से। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, बोल रहा हूँ कि मेरा जार्म सेल ट्यूमर है मीडियस्टेनम में। उसका केमोथेरेपी भी हुआ है, रेडिएशन भी हुआ है। तो ट्यूमर अभी एक ही जगह में है, वो बढ़ नहीं रहा अभी, और रेडिएशन के बाद जब
स्कैन कर गया, देखा वो ज्यादा घटा नहीं। देखिए ये प्रोग्राम नहीं है उसके लिए आप नंबर डाल दीजिए, बता दीजिए नहीं, और एक उसके। क्वेश्चन था। हाँ हाँ उसके लिए क्या हो रहा है, जो केमोथेरेपी जो चला हमारा, उसी लिए साइड इफेक्ट न्यूरोपैथी हो गया मेरा। हम्म। और न्यूरोपैथी के लिए हमारे घुटनों में दर्द होता है, पैरों में सूजन, सुनसुनापन, ये सब रहता है। तो हमारा प्रोग्राम ये कैसे आपका हो? न्यूरोपैथी चला जाएगा। ऐसे बहुत सारे हमारे पास में कैंसर के पेशेंट हैं जिनको हाँ। कीमोथेरेपी होने के बाद में वो बिस्तर से नहीं उठ पाते थे, हम्म, मगर अभी वो अपना काम खुद कर रहे हैं, सब कुछ अपने आप कर रहे हैं, उनको कोई हम्म, सहायता की भी जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे केसेस है हमारे पास में। तो लेकिन आपको प्रोग्राम वो वाला ज्वाइन करना पड़ेगा, ये प्रोग्राम नहीं। अच्छा, वंस अलग से। अच्छा, मेटास्टैसिस हो गया है अगर, तो फिर आपको वो अलग प्रोग्राम है, आप नंबर छोड़ दीजिए। नहीं, हमारे स्टेज 3 पे है, मेटास्टैटिक नहीं है। देखो स्टेज 3 पे भी है तो भी आपको प्रोग्राम वो ज्वाइन करना, बिकॉज वो इसी चीज को एड्रेस करते हैं उसमें। अच्छा, उधर क्या ये हमारा क्या पूरा प्रोग्राम ही अलग रहेगा? वो प्रोग्राम ही अलग है बिल्कुल। अच्छा, चलो, जो जॉइंट का जो प्रॉब्लम है अभी घुटनों का। वो भी उसी में एड्रेस हो जाएगा। वो अच्छा, तो अच्छा, न्यूरो अच्छा, रीजनरेशन जैसे ही शुरू होगा ना आपका, जो अच्छा। फैक्टर्स होते हैं जो ये क्रिएट कर रहे हैं ना, उसको हम कम कर देते हैं ना, तो फिर रीजनरेशन होना शुरू हो जाता है, फिर हेल्प करता है आपको उसी में तो वो एड्रेस। ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। हाँ वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अच्छा, अच्छा, थैंक यू सर। हाँ। तो आपका प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, And नमस्कार सर। आप आपके आगे आगे के जीवन के लिए खूब खूब शुभकामनाएं। Thank you so much and good night to all the participants. Whatever questions are left behind, because of time shortage, we could not attend to all questions. Please write in the webinar group and we will definitely get back to you. Thank you so much. Good night. Signing off, Rachna.